Another one for Mohsin as he brings up his 50. What a knock. 50 of 30 balls. He has been Mr. Fantastic. 50 for Safzada Farhan. Back-to-back 50s. Down the track. Takes the charge. 50 of 33 deliveries. A wonderful effort under pressure. Oh, bold ho gaye. Inside edge. Another 50 for Haider Ali. What a wonderful knock from this youngster. A very good morning from Rawalpindi Cricket Stadium, and we're all in for another exciting day of cricket. Match 11, where ABL Stallions will take on Lake City Panthers. They've got big names in both lineups: Shadab, Haider Ali, Sharjeel Khan from the Lake City Panthers, Hussain Talat. He's been in a really good form, and this man has made some trouble for the opposition. Usman Tariq, a lot more to watch. Maz Sadakat, also another prospect to watch. Sajid Khan, Muhammad Wasim Jr. And this guy Haider Ali, well, he has kept Lake City Panthers on a couple of occasions, but what he can do with batting, that's one thing to point. Well, this is how the standings are now for Bahria Town Champions Cup T20. ABL Stallions right on the top, followed by UMT Marcos, who faced their first defeat. Nurpur Lions on 3 with 4 points. Lake City Panthers on 4 with 4 points as well, losing 2, winning 2. Angro Dolphins yet to win a game. Well, now Haider Ali, sublime form he is in, and he made sure he cashed it the other night. Brilliantly batted, led Lake City Panthers into the win. A great prospect to watch, and I'll bring in Shah Faisal to spread more line. Good morning. Good morning, Marina. Good morning, all. It's a kind of murky morning here in Rawalpindi, but the forecast is good, and this man has been very good. Haider Ali, consistent and aggressive in nature. We all know that, but the refreshing thing about this tournament for him is the consistency. He had to lead his side on a couple of occasions. Showed great sense of responsibility, and that is a new Haider Ali we are seeing in this year's Bahria Town Champions T20 Cup. Well, how will be conditions for today? Marina Iqbal was down there in the middle. Let's see what she thinks of the pitch. Beautiful winter's morning here. It is chilly, but sun is trying to get out. The temperature 13 degrees so far, and humidity is 37%. Well, moving towards the pitch, firstly let me tell you about the dimensions. It's 66 meters all over the ground. This surface now, I can tell you that so far it is the best surface of the tournament we have had, and I can back it up with some stats. On the doubleheader played day before yesterday, 707 runs were scored with the average of 8.85 runs, and for bowlers 25 wickets were taken, 11 for pacers and 10 for spinners. Well, now when you look at this, it's a hard deck, not much cracks on there, not huge grass cover, but it's evenly poised. We'll get a good bounce up, we'll get some pace, but also there are runs up and value for shots for the batters. It's all about how the players will implement on it, because this is a beautiful surface to play cricket on. A good surface to play cricket on. That has been the case here generally in Rawalpindi Cricket Stadium. Yet another very good looking pitch. Mosaic in looks, but very little grass. Very hard, rolled in very nicely. Curator Sarfraz and Tony Hamming deserve a lot of credit for producing very good cricketing pitches, and this looks no different. Marina, you were out there. What do you make of this? I wanted to bat on the surface for a while, but unfortunately can't. But let's see that what the captains will opt to do, because it seems like a really good surface. And well, let's see what the captains will do it. They are with Ali Yunus in the middle.
Yes, a lovely Sunday morning and two excellent teams taking on each other. Doesn't get any better than this, and we're all set for the toss. The two captains, Mohammad Haris for ABL Stallions, Shadab Khan is back as captain of Panthers, and Iftikhar Ahmed, the match referee, and Mohammad Haris will give it a spin. Heads is the call. Tails it is. Bowling करेंगे? जी बिल्कुल बॉलिंग करेंगे. बहुत सिंपल डिसीजन रहा है यहाँ पे बॉलिंग करना. कंडीशंस या टैक्टिकल? आज थोड़ा और भी सिंपल हो गया वेदर की वजह से, लेकिन यही है कंडीशन की वजह से. अगर आप रिजल्ट्स को देखें तो 10 मैचों में 5 बैटिंग सेकंड ने भी जीते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं है वहाँ पे. जी बिल्कुल, ये शुक्र है कि टॉस का इतना मैटर भी नहीं है, लेकिन शुरू में वैसे भी थोड़ा मॉइस्चर होता है तो उसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं. अगर टीम ज़्यादा फ़ायदा उठाती है तो फिर उनको फ़ायदा होता है. तो कितना चेस करने में खुश रहेंगे टीम? कोशिश करेंगे एनीथिंग बिलो 150. और टीम चेंजेस कोई? एक चेंज है, मोहम्मद आमिर खान खेल रहे हैं मेहरान मुमताज़ की जगह. ऑल द बेस्ट हारिस. थैंक यू. बैक एज अ कैप्टन, सबसे पहले अपना बताइए फिटनेस का. अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि अब थ्रू आउट द टूर्नामेंट सारे मैचेस खेलें. आपने देखा था थोड़ा बॉलिंग में मसले आए थे, तो एज अ बैटर देखेंगे आज आपको हम? जी बिल्कुल, अभी स्टार्ट एज ए बैटर करूँगा क्योंकि उस तरह रिकवर नहीं किया और लेट्स सी, क्योंकि डिपेंड ऑन द सिचुएशन शायद एज ए बॉलर भी देखें. और आप टॉस के बताइए, आप जीतते तो आपके क्या इरादे थे? देखिए अली भाई, सब कोशिश ये कह रहे हैं कि बॉलिंग कीजिए क्योंकि अर्लियान, क्योंकि जल्दी मैच स्टार्ट है, वेदर ऐसा है तो सब बॉलिंग में ओबियसली हम भी बॉलिंग करना चाहेंगे. लेकिन इधर अब तीसरा मैच स्टार्ट होने जा रहा है. पिछले 2 मैचेस भी यहाँ पे हुए हैं तो हमने पिछले मैच में भी देखा था कि लिटिल बिट स्लोअर साइड था. तो लूज़र टास्क भी इतना मुझे नहीं लगता कि इतना फ़र्क डालेगा, क्योंकि अगर रन्स ऑन द टोटल बोर्ड पे होंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशन है कि आप इनको स्ट्रिक भी कर सकते हैं. रन्स ऑन द बोर्ड कितने रन्स सिक्योर होते हैं या सेफ होते हैं? देखिए जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट चल रहा है 160, 165 या 170 तक हम देखेंगे, क्योंकि जो पहला मैच है उसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है वो चेस करना, और हम कोशिश करेंगे उतना देखेंगे. आपके अलावा कोई और चेंज टीम में? नहीं, मैं ही हूँ, मैं रिजवान की जगह. चलिए, ऑल द बेस्ट. Thank you. Right, the news from the toss is that ABL Stallions have won the toss and they will be bowling first. Yeah, Lake City Panthers have been put to bat first by Allied Bank Stallions. No surprises. Win the toss, bowl first. We've got the two umpires taking the field, Mohammad Asif and Mohammad Sajid, experienced campaigners. A little bit of chilly weather here. Some moisture might aid to the bowlers. Shah Faisal, what do you make of it? Yeah, it's a bit cloudy and overcast as well today. The only thing, we haven't seen much swing. We'll talk about it, but Shadab as a captain makes a comeback. And Rizwan Mahmood, the young batter from Hyderabad, he's been benched for this one. Just the one change. Formidable batting lineup. Informed men are Haider Ali and Umar Siddiq. Sharjeel would need some runs. Good to see Wasim Jr. back in the fold. Well, Allied Bank Stallions going with one change as well. Mohammad Amir Khan brought in place of Mehran Mumtaz, the left-arm spinner. And you can see that bowling line: Abu Baid, Muhammad Ali, Usman Tariq, Shoaib Malik. Well, there's a lot to deal with for Lake City Panthers batting first. Both teams are coming with a win. Allied Bank Stallions, Mohammad Mohsin was the player of the match. He aided Hussain Talat and Lake City Panthers. Sharjeel yet to click. We saw some glimpses of him in the previous game, but he would like to, and he'll be itching to get those strike rates up. 137, highest of 117. Lucky for bowlers that he yet hasn't taken the zone. Umar Siddiq with bat, highest of 78, strike rate 114. The run rate, the average is already increased. It was under 20 before the tournament. This man Muhammad Ali has been in very good form. Just the 26 matches in this format, but 36 wickets. He's a wicket taker at economy rate, slightly on the higher side, but remember he bowls in tough phases. Very good average as well. His kind of surface hit the deck. Marina was talking about the weather earlier, and see if we can get some swing. Muhammad Ali is not a swing bowler. He's basically a seam bowler, hit the deck bowler. Be interesting to see if he tries that fuller length, at least for the first few deliveries, to see if he can get any swing. Clock has just ticked over to 11.
Sajid Afridi will call play. One slips rather wide in place. Everything is ready on spot. One slip in place, deep third and deep square leg. Umar Siddique to face the first delivery of the morning. Into the surface, just straying down the leg. We'll have to bowl that again. Unusual to start off against two left-handers. Generally, we've seen quite a few bowlers struggle in general to bowl to left-handers, but when they're pitted to bowl against two, you'd feel it'd be slightly easier to get into a line in length. They don't have to change a lot, but at the same time, it's difficult for bowlers to start off against both left-handers, to generally bowl to right-handers at the beginning of the spell. Not happy with something. Umar Siddique. There's always movement behind those screens. Well, it seems like a decent surface, but yet probably a couple of overs might be conducive for bowlers. It does grip just slightly off the surface. Again, just trying to angle it in, but the line is wrong from Muhammad Ali. Both these two deliveries would have been very good deliveries to the right-handers. Just a little bit of shape on it. Haris ran all the way down from his position behind the stumps. A word with Muhammad Ali. Generally, Muhammad Ali's strength is his consistency. More often than not, he hits the right areas. Bit of a sluggish start. Better this time. Right on line and right on money. Giving no room. This is where he needs to be consistent. Everybody had a day off yesterday. Action had been hectic since the beginning of the tournament. What were you up to, Marina? Well, I thought for a while to go out, but it was quite chilly. Went for some run on treadmill, but other than that, it was nice, cozy evening inside my room. What about you? Not a lot to do, but yeah, Pindi being my city, so quite a few friends. Again, wrong line. This time he'll be punished even more. That's the boundary. Umar Siddique has been in very good touch. Neat roll of the wrist will get things going for the left-hander. Not a good start for ABL Stallions and Muhammad Ali. Again, just the line. He started off from middle, ended on the leg stump, and it was pitched up. Easy pickings for Umar Siddique. Spaded right underneath his eyes. Made sure the wrist came in play, kept it down, and earned a boundary. That's very unlike Muhammad Ali. Generally very consistent. Again, just the line. The line that he starts with, I think he needs to move it a little further towards that off stump, probably fourth stump, and then bring the ball back in to Umar. He gets in trouble, Umar Siddique, whenever it's a straighter line. You don't want to give him room either side of the wicket. It is the dilemma for the right arm over bowler to a left-hander. They don't want to give him any room with the natural angle, but then overdoing the in-swinger in terms of line. A lot of bowlers have found easier with the new ball to go around the wicket to the left-handers, either cramp them or take the ball away from that angle, making it difficult for them. Just ending within the stumps. And he's bowling quite close to the stumps, Muhammad Ali. Normally we've seen whoever wants to take it away can use the crease as well. You'd be thinking the field he's got for this kind of bowling. Fine leg is up in the ring. Sajid Afridi on field, very experienced. He's
officiating at the media centre end of this Rawalpindi Cricket Stadium. Mohammad Asif, once again, will be in spotlight in the action. He'll be officiating from the pavilion end. Change of angle now from Muhammad Ali coming round the wicket to Sharjeel. That is interesting, and straight away change in field as well. Third comes in. We've got deep square leg and deep fine as well. The idea is to cramp him. Starts off well. This is a better angle to bowl, even to Umar Sadiq as well. Yeah, that's very interesting that there's two left-handers and Ali has different ploy for both of them. For Sharjeel, both the sweepers are out on the onside. It's chilly morning, Sunday morning. People tend to wake up late here in Rawalpindi. Few are in already. Nicely wrapped up. You'd have to bring your warm clothes if you're coming to the stadium. Just again angling in. You have to be careful with Sharjeel, especially with that length, because he likes to go into that mid wicket. Dot just one leg bias to end the over. First over gone, Lake City Panthers 7 without loss. Muhammad Amir Khan, the only change in Allied Bank Stallions. Coming in place of Mehran Mumtaz, the young left-arm spinner. Amir is a skiddy campaigner. He's very quick through the air, not very tall. And immediately into action from the pavilion end. Full toss. Dispatch, but oh, the fielder did well in the end, was very close to the boundary rope. Good bit of work there. We'll have to have another look. I think he was very close to that rope. Was a clean pickup. Have a look at his feet. So far, so good. Still good. And it's all right. Oh, or is it? Not quite. That's a boundary. I thought he did the difficult part all right, but then couldn't keep himself inside the field of play. Yeah, boundary it is for Sharjeel, up and running. That's why you need to cut the angles. You need to rush in. Again, just in swinging. Good length from Amir. He's quick through the air. This was low full toss. Absolute freebie. Player like Sharjeel wouldn't spare you. Could he really have released the ball as soon as he got the grip of the ball, and then another low full toss. These modern day fielders, they're good at doing that, but Taimur just held on to the ball and just stepped on the rope. I think he had ample time to pick it up and cut the angle rather than just going around waiting for the ball to get closer to the boundary. Amir Khan getting his chance in playing 11. Picked up 4 wickets, 4 for 35, economy 8.20. Firing in, you can hear his grunt. Change in field. Third is back. They've got 45 now. Oh, picked up straight in the air, miscued. There's a chance and taken easily by Muhammad Ali. Sharjeel's problems continue for Lake City Panthers, and he's out. He's looked a shadow of himself. The Sharjeel that we had grown to know this tournament hasn't been one of his very best. Once again, looking to pick up on the pads and a leading edge.
Amir Khan make immediate impact on the proceedings. It went right up, and Muhammad Ali was not going to miss that. He's a very, very safe fielder. Sharjil's woes continue. Another low score for him. Gone for 4. Lake City Panthers 12 for 1. In form, Haider Ali walks out in the middle. It's been a great touch. He's looked totally different. You can see the numbers now improving. He's spending more time out there, taking responsibility and entertaining us and the crowd as well. Another very crucial knock. This is the beauty of this tournament. Haider Ali, who's been doing well, once again is in a situation where he'll have to be at his very best. The ball is moving around a little bit. Amir shaping the ball in and out. Straying down the leg. That's not the sort of delivery you would want to bowl after getting a wicket. Bit of credit to Amir for that dismissal of Sharjil. Up until that point, he was bowling in swingers. This one just straightened down the line, and Sharjil, who was looking for that inward movement, played against the tide and got the leading edge. Credit to Amir. But like Marina said, not a good delivery to follow up and bowl to Haider. It was quick, but off target. That's good delivery. Good length, just a shape away. Muhammad Amir was given the opportunity. Well, he played for Karachi Kings in PSL, just played 2 matches. In 2019-20 season, he was picked up by Peshawar Zalmi as an emerging category, played 4 matches, picked up 3 wickets, and was also in the camp for the Pakistan under-19. Oh, that was quick. Bit of ambitious appeal from Amir. Amir is kiddie, so he won't bounce over. It's just the angle. We'll come back and have a look at that. Successful over from Amir. 2 done. Lake City Panthers 13 for 1. Change in bowling. Ubaid Shah now brought in by Mohammad Haris in place of Muhammad Ali. Well, he's a young prospect, still new days for him at this level. He was pretty good in the under-19s. Cricket, well, that's one thing you learn every day. And it's a good exposure for him as well. Keeping 1 slip for Umar Siddiq. Deep third and deep square leg. Oh, peach of a delivery to start off with. Some movement, but perfect length from Ubaid. What a start for the youngster. Have a look at that. Close to the stumps. And it just seemed off a length. Turned Umar Siddiq around. That is a great start. That's just about the perfect line and length for a left-hander if you want to take the ball away from over the wicket. This time slightly straighter in line, but the length is good. Squared him up on the previous delivery. We've seen that in early couple of overs, the ball slightly does grip off the surface. So it's not easy to play on the up.
Last ball, last over. Clearly Haider was late, but the angle was too acute and it was just going down the leg side. Amir is quick through the air and he's skiddy, not very tall, posing trouble in his first over. Stayed a little bit low. There's a huge gap. Will pick up an easy couple. This is a crucial partnership for Lake City Panthers, the two informed men. Good to see Shadab back, and as a batter it looks like it. Maybe he's listed to come down at number 4. Always has a smile on his face. Yeah, and you need those jackets here in Rawalpindi, early morning and late in the evening. Oh, good delivery yet again from Abad. It's good to see him taking responsibility up front. This one just took off a little bit. Just kicked off a length. Once again, the area, the line in particular was very, very good. He could do with a slightly fuller length. Once again, Umar Siddiq turned around. But this is terrific from the youngster. I got an opportunity, at least many opportunities in Under-19 World Cup to talk to him. And he's such an ambitious guy. Always keen to learn. Oh, that's timed beautifully, but Muhammad Ali will have to do a bit of a work. Another easy 2. He's always learning from his elder brother. He wants to make an impact, not just with the ball, but also in the field and batting. And you can see the hunger in his eyes. He's a very fit-looking guy as well. Works very hard on his fitness. Although very young, but it's just amazing to see the kind of potential these young Pakistani fast bowlers have. Gradually building up the crowd. Got mid-wicket now, change in field. Straying down the leg, there's something. There was a definite sound, but lucky for Umar, it wasn't the bat. 3 overs gone, 17 for 1, Lake City Panthers. Cautious start for Lake City Panthers. 1 down, that was Shajil Khan. Undone by Mohammad Amir. Cracked. Wasn't timed perfectly, but I think it still has a lot of legs to go to the boundary, and it does. First boundary for Haider Ali. Crunched on the up. This Rawalpindi outfield, you'll get full value of your strokes. Not a half volley by any means. His weight was coming into the shot. Not much of a footwork, stand and deliver. But beautiful hands. He just delayed his shot a little bit. Muhammad Ali, a bit of a clumsy effort in the field. That's what you want to see from the batters on these surfaces. There is space, there's genuine bounce, true bounce. Just time it. We've seen many batters trying to force shots with power rather than time it. We've seen him do that. Shoaib Malik, spot on with his technique. This one was really good. Full face of the bat, just timing it. Just delayed his stroke a little bit to get that timing. Fuller, need to hurry. It's good cricket from Haider. Well, we built him up pretty well in the pre-show. Don't want to jinx him, but I think it's a different Haider Ali that we're seeing in this tournament, and it's so good for Pakistan. Have a look at that. He got into position, you feel a little early, but then in his bat swing, he just held it on for a little longer
and played it when the ball arrived. It was a superb piece of timing. Yeah, scored 62 not out the other night. Squared him up yet again. Mohammad Amir is creating some trouble for Umar Siddiq, unable to cover the line. Well, Umar Siddiq has got his dancing shoes on this morning. He's been turned around many a times. A couple of times by Obad in the last over, and this was another peach. The line is superb. Turned him into an S. Lucky Umar Siddiq is still there. Stepped out of the crease, straight down the ground. Will pick up a single, but good bowling, good line and length from Amir. He's getting enough movement to create some trouble for the batters. Still interesting, Manira. Whatever movement we're seeing, it's seam movement. We haven't seen any swing in the air. The conditions you would think will be ideal for swing throughout the tournament. For memory, I don't recall anybody getting swing in the air. There's plenty of seam movement. 6 coming off it. One more delivery to go in this over. Good length. No room given whatsoever. Dot to end the over. 4 gone. Lake City Panthers 23 for 1. अच्छा टॉस जीता मोहम्मद हारिस ने. अभी तक खासे खुश होंगे. अच्छी फील्डिंग की. यासिर ने गेंद को अपने बराबर से निकलने नहीं दिया और अभी तक बिल्कुल यहाँ लेक सिटी पैंथर्स को कहीं भी नहीं निकलने दिया इन 4 ओवर्स में, जिसमें एक विकेट भी गिरी है. अच्छी फील्डिंग देखने में आई है. उमर सिद्दीक हालांकि बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन यहाँ उनको आज़ादी मिल गई और गेंद पहुंच जाएगी बाउंड्री के बाहर. खासी विड्थ थी ऑफ स्टंप के बाहर और उमर सिद्दीक ने इसे चलता कर दिया ऑफ साइड फील्ड के ऊपर से 4 रन्स के लिए. या बेहतरीन क्रिकेट है ये और बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इन कंडीशंस में ख़राब बॉल मिले तो आप उसका फ़ायदा उठाएं. और यहाँ पे यही किया है उमर सिद्दीक ने कि ये ख़राब बॉल था आउटसाइड दी ऑफ स्टंप. अपने बाजुओं का शानदार इस्तेमाल किया और जो एंगल था बल्ले का वो हमेशा से ही ऊपर की तरफ था, हवा में ही खेलने गए तो अपने ख्वाहिश के मुताबिक रिजल्ट भी हासिल किया. टॉस का आपने जिक्र किया क्योंकि आज थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशंस हैं. बिल्कुल अच्छा टॉस है जीतने के लिए, लेकिन जो स्टैट्स हैं जो कामरान मुजफ्फर साहब बताते हैं हमें कि जिस भी टीम ने टॉस जीता है बॉलिंग की है बिल्कुल, लेकिन जो रिजल्ट रहा है वो 50-50 रहा है. 5 दफ़ा टीमें बैटिंग करके जीती हैं और 5 दफ़ा चेस करके. आज थोड़ा कंडीशंस अलग हैं तो देखना होगा कि क्या रिजल्ट भी अलग निकलता है या नहीं. थोड़ा बादल ज़रूर आए हुए हैं, सूरज नहीं देखा सुबह से हमने, इसीलिए हारिस के मुंह पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी जब टॉस जीते और उन्होंने कहा बगैर सोचे समझे कहा बॉलिंग ही करेंगे. तो क्या आपको लगता है कि अभी तक फ़ायदा उठाया है? असल मानों में सिर्फ एक ही विकेट हासिल किए. अली कई बार T20 में विकेट लिए बगैर भी काम जो है वो आपके हक में हो रहा होता है जब इतने ज़्यादा रन्स नहीं बनते. अभी हम देख सकते हैं इस इनिंग्स में जो बाउंड्री काउंटर है वो बहुत कम है और रन बनाने की जो औसत है वो 6 है और अगर ये 40 से कम तक ये पावर प्ले ख़त्म होता है तो ये जीत समझी जाएगी.
अच्छा गेंद को आज सीम किया है। एक बार फिर गेंद तेजी के साथ कट हुई, सीधी जाकर रान से टकराई। हर मैच के साथ इम्प्रूवमेंट नजर आई है हमें उबैद शाह की बॉलिंग में। पहले मैच में 2 मैचेस में थोड़े रस्टी थे, थोड़े रन ज़्यादा दिए थे, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चला है थोड़ी समझ आई है कि इन कंडीशंस में कहाँ बॉलिंग करनी है। और तारिक भाई यही शायद फ़ायदा है, जितना जो सपोर्टिंग स्टाफ है साथ, जिस तरह के लोग हैं एबीएल स्टैलियंस के साथ भी। उबैद आसिफ हैं जो कि बहुत ही सीजन फास्ट बॉलर रहे हैं, पाकिस्तान डोमेस्टिक में तो बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही है हमेशा से। तो इन्हीं यंगस्टर्स के लिए ये ज़रूरी है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट चले ये बेहतर से बेहतर होते चले जाएं, और स्पोर्ट्स स्टाफ का यही काम है कि इनके साथ काम करें और इनका विद इन द टूर्नामेंट ही इनके अंदर निखार आए। और शोएब मलिक तो है ही हैं। यहाँ बिल्कुल आपने वजह कहा। मोहसिन पिछले मैच की बैटिंग हीरो, अभी कुछ देर के लिए ये मैदान से बाहर चले गए थे। अच्छे ड्राइव्स किए हैं आज हैदर अली ने, क्योंकि आज ज़रूरत है कंडीशंस के एतबार से। अब लेग साइड में नहीं खेल सकते। और इख्तिताम को पहुंचा 29 पर 1। सर्दी हो या गर्मी हो, रावलपिंडी के क्राउड को लोगों को नहीं रोक सके स्टेडियम आने से। देख सकते हैं आज भी एक ठंडा दिन है, लेकिन आवाम आ रही है, क्राउड आ रहा है। और ये उठा के खेल दिया, ये बहुत बड़ा छक्का है। अपनी फॉर्म को कैश करते हुए हैदर अली जोन में दे दिया बॉल। बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, समझते हैं इस बात को। और जैसे हमने पहले कहा कि खराब बॉल को यूटिलाइज कर रहे हैं एक बार फिर। जहां बेहद ताकतवर स्ट्राइकर, वो बिल्कुल हिले तक नहीं अपनी जगह से, और गेंद कोसों दूर गई। क्या कहना, कमालस हैदर। लेंथ को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत जल्दी पिक कर लिया था। खासी तेज निकली। अच्छा मुकाबला दोनों के दरमियान ठन गई है। नौजवान फास्ट बॉलर हैं आमिर खान और हैदर, बेहतरीन अटैकिंग फॉर्म में हैं। अच्छी क्रिकेट। थोड़ा गर्मा गर्मी तो बनती है भाई, एक फास्ट बॉलर हैं, आप उनको अगर इतने जोरदार तरीके से उठा के मैदान से बाहर फेंकेंगे तो गुस्सा तो उसको आएगा ही। उसका इजहार भी किया उन्होंने। हैदर अली जिस तरह की फॉर्म में है, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन को कहीं भी किसी तरीके से भी डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन कप्तान हारिस को अच्छा लगा था, तेज बाउंसर। शानदार बॉलिंग, बाउंसर के बाद ऑफ स्टंप के बाहर दूर से ड्राइव कराने की कोशिश की। हैदर अली तकरीबन उनके जाल में आ चले थे। अच्छी फास्ट बॉलिंग का मुजाहरा, और जो बाउंसर था, गेंद जिस तरह की इनके ग्लव्स में पहुंची, उससे हमें भी अंदाजा हुआ कि पहली दफा इस टूर्नामेंट में जो है वाकई किसी ने तेज गेंद की हो। यार तकरीबन गलती करने पे मजबूर कर गए थे हैदर अली को। ओह ये देखिए क्या क्रिकेट है, ये क्या शॉट खेला है। एक बार फिर एक और लंबा छक्का हैदर की जानिब से। बेहतरीन क्रिकेट हैदर अली की जानिब से। यहाँ रति भर आगे थी, और इसे एक बार फिर हैदर अली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया। और जो बेस है बेहद मजबूत, हैदर अली की हिटिंग पावर हमेशा से थी।
लाजवाब शॉट। इस बार अपनी शेप जो है उसको बिगड़ने से नहीं बचा सके। ये अक्सर होता है जब आप ज़्यादा शॉट्स खेलने के लिए चले जाते हैं। ये मुकाबला तो बहुत कमाल का जारी है। आमिर और हैदर दोनों ही अंडर 19 में एक ही साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, याद रहे, इसलिए एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते होंगे। और जो विकेटों के पीछे हारिस हैं वो भी उसी टीम का हिस्सा थे, इसलिए अच्छा मुकाबला है। बैलेंस थोड़ा थोड़ा जोर से मारने चले गए थे हैदर अली, और ऐसा हो सकता है कि गुस्से में काफी कुछ इंसान गलत करता है। और दूसरी जानिब है उमर सिद्दीक, जो कि बहुत कूल और बहुत काम तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। 6 ओवर्स का इख्तिताम हुआ 43 पर 1। पावर प्ले कि अगर हम नजर डालें तो ये यकीनन अब पैंथर्स के नाम रहेगा। एक विकेट जरूर गंवाई थी, आउट ऑफ फॉर्म शर्जील खान वापस गए थे, लेकिन उसके बाद जैसा कि ज़्यादातर मैचेस में हुआ, हैदर अली ने टीम को संभाला है, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है। और जिस तरह के शॉट्स, क्वालिटी शॉट्स देखने को मिले हैं, एक अच्छी खबर है पैंथर्स के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी कि हैदर अली अपनी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 19 रन पर मौजूद है 14 बॉलों पे, और उनका साथ दे रहे हैं उमर सिद्दीक 16 रन पर। शर्जील आउट होने वाले बैटर जिन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए। शोएब मलिक अब आएंगे। पिछले मैच में जल्दी बॉलिंग करने के लिए आए थे, पावर प्ले की पाबंदियों में, और खासे महंगे साबित हुए थे। शुरू के 2 ओवर्स में ही यूएमटी मार्क फोर्स के दरमियान ये मुकाबला हुआ था। यहाँ पर मिस हिट, एक ही रन उमर सिद्दीक को मिला। ये बिल्कुल खामोश तमाशाई बन जाते हैं कई बार हैदर अली के साथ। और दरअसल यही 2 खिलाड़ियों हैं, इनकी जो फॉर्म है हैदर और उमर सिद्दीक की, यही इनकी कामयाबी का बाइस बनी है। उसामा ने पिछले मैच में अच्छा स्पेल किया, लेकिन हैदर प्लेयर ऑफ द मैच थे। हैदर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ये अब बावर करा रहे हैं अपने बारे में कि अब ये एक मैच्योर बैट्समैन जो है बनने की तरफ रवां दवाएं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि एक मैच्योर बैटर बनते चले जा रहे हैं। 2020 के बाद ये वो साल है जिसमें इन्होंने एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों को ही बढ़ाया, इम्प्रूव किया है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। ऐसा लगता है कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। शायद बीच में ऐसा लगा था कि वो एक पिंच हिटर या एक बिग हिटर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, लेकिन वो सही तरीका नहीं था। उठा के खेले, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है जो कि रोक नहीं पाएंगे। 4 रन के लिए बॉल चला गया। बहुत ही कमाल की प्लेसमेंट उमर सिद्दीक की जानिब से, जहां इनसाइड आउट खेला, विद द स्पिन खेला, और ये उम्दा रिस्ट वर्क, कोई मौका नहीं मिल सका फील्डर को। बाउंड्री लाइन पर महज सदाकत थे। अगर विकेट के दरमियान में बॉल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा फायदेमंद होगी शोएब मलिक के लिए। और यही हारिस भी जो कप्तान है पीछे, वो यही समझा सकते हैं क्योंकि कप्तान है। ऑल्दो तो शोएब मलिक है दूसरे एंड पे, समझाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि बीच में बॉल कीजिए। विकेट्स के दरमियान में बॉलिंग करते रहेंगे तो फायदा हासिल होगा। और हैदर अली का हम जिक्र कर रहे थे, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है तारिक भाई, कि जितना टैलेंट इनके अंदर है, जितना स्किल लेवल इनका है, अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो कैसी बैटिंग करना चाहते हैं, किस तरह की गेम अपनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और लगता है कि ये साल हैदर अली के लिए बहुत ही कमाल का होने वाला आगे 2025 है।
जाइए और लाइए, बहुत दूर एक बार फिर वार किया और इस ओवर का खात्मा किया छक्के पर हैदर अली ने, जो अब इनके लिए मामूल बनते जा रहे हैं 56 पर 1। चार बॉलर्स को आजमाया गया है। आमिर ने अच्छा स्पेल किया नईम के साथ, उबैद ने भी खासी नपीतुली बॉलिंग की, लेकिन कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं बन सकी। और तुर्क का जो पत्ता है वो अब निकाला है हारिस ने अपनी जेब से। उस्मान तारिक आएंगे एक्शन में। 11 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं अपने मुख्तसर से करियर में। मिस्ट्री स्पिनर हैं, कामयाबियों का बाइस बनते रहे हैं अपनी टीम के लिए। जब जब आए हैं इन्होंने अपनी टीम की जो मुश्किलात हैं वो कम किए। पावर प्ले में ज़्यादा विकेटें इनको नहीं मिली हैं इस टूर्नामेंट में स्टैलियंस को, लेकिन उसकी जो तलाफी है इन्होंने की है नॉन पावर प्ले ओवर्स में आकर उस्मान तारिक ने। इतना बड़ा ये एडवांटेज है उस्मान तारिक जैसा बॉलर होना आपके बॉलिंग यूनिट में कि जब भी लेके आए वो विकेट हासिल करते हैं। यहाँ पे ऑफ बैलेंस हो गए थ्रो करते हुए बादशाह। तो बहुत ही खुशकिस्मत होता है कप्तान जिनके पास ऐसा बॉलर मौजूद हो यूनिट में कि अब जब भी लेके आएंगे वो रन्स भी नहीं देंगे और विकेट भी हासिल करेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो जब आखिरी बार ये दोनों आमने सामने आए थे तो 15 रन हासिल किए थे हैदर ने इनके पहले ओवर में। एक छक्का 2 चौके लगाए थे। तो देखना होगा कि अब क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट चला है निखार आया है हैदर अली की भी बैटिंग में, तो ये अच्छा मुकाबला होगा। मिड विकेट पर फील्डर को निस्बतन करीब बुलाया गया। अक्सर हमने देखा उस्मान तारिक जब बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो अगर वो कमतर बैट्समैन खेल रहा हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि ये हाथ से नहीं रीड हो पा रहे। हैदर और उमर जो हैं ये क्योंकि दोनों मंझे हुए इस वक्त खिलाड़ी हैं, देखना ये कि ये इनसे किस तरह से निपटते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो तो खासी मजबूत है। ये कैरम बॉल करने की कोशिश की। शादाब खान की आज वापसी हुई है। इससे पहले 2 मैचेस खेले, लेकिन खातिर खा इन्हें और टीम को उनमें कामयाबी नहीं मिली थी। फुल शॉट 1 ही रन बन सकेगा। अच्छा आगाज उस्मान की जानिब से, और ख़ास बात यह है कि ये दाएं और बाएं दोनों हाथ के बल्लेबाजों को पूरी महारत से, बराबर महारत से बॉलिंग करते हैं। इनको कब देखा जाएगा अली गेंद के साथ? अच्छी बॉलिंग है। साजिद खान बहुत ही एनिमेटेड कैरेक्टर है। शायद अगली टेस्ट सीरीज, होम टेस्ट सीरीज का इंतजार करना पड़ेगा हमें साजिद खान को दोबारा एक्शन में देखने के लिए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने के ये बिल्कुल मुंतज़िर होंगे। इन दिनों कंडीशंस जो हैं वो बहुत इंतहाई हो गई हैं टेस्ट क्रिकेट में, इसलिए जनूबी अफ्रीका नहीं जा सके। 8 ओवर्स के बाद 60 पर 1।
Off to a decent start, Lake City Panthers. Two informed men, Haider Ali and Umar Siddiq, will now have to watch out for the left arm spin of Mas Sadakat. 5 games, just the 1 wicket. The partnership is already 48 runs off just 38. Haider Ali off to another start. Nice. Big City Panthers looking to build a formidable score, and alongside me has settled into his seat former Pakistan skipper Salman Butt. A very good morning, Butt sir. Jazakallah Shaji, thank you, and a very good chilly morning to yourself and all the people watching this game. 1-1. Haider Ali looking for a couple, but luckily his partner turns him back as the fielder hits the stumps directly. It's a good partnership, this. Both batters looking well set now. Sam Talat can do no wrong in this tournament. Look at that. Haider was going back, but then sent back by Umar Siddiq, who would have been short because that throw came in and hit the stumps direct. Haris been busy behind the stumps. He's used all his 5 bowlers. Came right inside the line, looking to go for that big. I'm sure he was looking to hit it for a 6. Thick inside half will earn him just a single. Shabash. Ubaid Alak bara. Shabash. Nice visuals these. As Haider Ali cuts one which is pretty close to him. In the end, just gets a single down to the 3rd. It's important that one of these batters goes the length, because that has been the success story of the teams posting big totals. That they have had partnerships, either 1 or 2 of their batters have batted the length. And here, both of these players, Umar and Haider, they look well set and are on track. Fires it into the block hole. Interesting to look at the bowling card, which Sabi may discuss in detail in the next over, but they've used 6 bowlers. And other than Usman Tariq, who has a bit of a mystery about himself, the bowlers towards the back end of the innings, if wickets are in hand, there's no really designated death bowlers in that lineup. Beautifully played, short and wide, and Haider waited long enough to put it away from the sweeper. A boundary to close out over number 9. 68 for 1. Look at that last ball, last over, slightly slower, but look at the footwork. Haider went right back in his crease. And now it's Umar Siddiq's turn. These two left-handed, right-handed batters have complemented each other very good. And that's the cause of formation of such a wonderful partnership, steadying the ship. And now looking to launch. 57 of just 45 deliveries, these two. Haider once again, very impressive strike rate. Umar Siddiq run a ball. Haider has shown an inclination of playing Usman Tariq off the back foot. Usman Tariq is the man with the most wicket in the tournament.
Yes, the stats of Usman Tariq tell you that the mystery hasn't been solved yet. It's still there and pretty much something that the teams have started to respect. Haider Ali in the first game went after him and then got out to him, and now he's looking to be a bit cautious against Usman Tariq. And he's the only bowler in the tournament with an economy rate of less than 6 runs per over and also picking up the highest number of wickets. Once again, Haider Ali is adamant to just push him around for once and to attack the guys who are bowling from the other side. And which is a fair enough strategy. In the last game that Pakistan played against South Africa, even the Seth Reza Hendricks and Van der Dusen, both of them did not attack our mystery spinner. And Abrar, when he was bowling, they were just pushing him around, and the rest they were taking apart. So I think it's a decent strategy. If there is a mystery about someone, then let's not give him any wickets. And that's the reason a while ago when I just looked at their bowling card, all the other bowlers, their medium pace, Amir Khan, Muhammad Ali, Ubaid Shah, and then Shoaib Malik and Mas Sadakat. So apart from Usman Tariq, if they don't give him any wickets, well, he's feeling the pain at the moment for that blow that he took off his fingers. And I think taking advantage of that, as we see Usman getting his finger knocked back with that push from Haider. Umpires have called it drinks. So, just 2 balls shy of the halfway stage. Lake City Panthers 70 for 1. Being put in, Lake City Panthers looking to set a platform 70 for 1 after 9.4. Haider Ali once again the mainstay, 35 of 26. Umar Siddiq playing his part, a bit sedate today, but he's still in there in the middle. Haider Ali showing the kind of touch that he's been in throughout the tournament. That's power for you, off a length, dismissive. Twice against Amir Khan and then against Shoaib Malik. This was a beautiful cricketing stroke. Just playing it late and beating the sweeper who wasn't very far.
Yet another good knock from Haider Ali, who's continuing his good form. Haider Ali, 5 games and 222 runs, has just stepped over Hussain Talat, who was leading previously. Both batters with 170 plus strike rate. That is great to see. And Haider Ali, for long, hasn't been up to his potential, and this is absolutely a great side to see him get runs consistently. And the same goes for Hussain Talat, who's also another very talented middle order player and somebody who has been consistent in the last year or so. Floated up by Usman. Just a single will close out the over. That was halted due to injury to Usman earlier. 10 gone. Lake City Panthers 70 for 1. Crowd started to build. Still overcast here in Rawalpindi. Muhammad Ali once again into the bowling crease. Into his second over, he's just bowled 1. Good to see a lot of youngsters in the crowd, both boys and girls. For that fuller length. This partnership is there. 2 batters are now set, and probably it's that time where very nearly we are going to witness a launch, and the batters would feel now is the time to go. And they have power players to come in, as it's Barrier Town, which goes global. And they are going to develop a world-class gated community in Dubai South. And all the very best to the people who are going to go and live there and enjoy the Barrier Town. Change of pace. Haider disappointed. You hear the grunt from him through the stump mics. He had only that fielder to beat, and there was a huge gap behind him. Probably the lack of pace did not allow Haider Ali to get the placement. And it's intelligent bowling from Ali, because Haider is in such good form that anything on length and with pace on it, he fancies hitting it out of the ground. And he has been successful more times than not. That's why they have deep long on, deep mid wicket. This is good from Haider. Bowled with on a good line and length, and he just played it with soft hands for 1. Ali is mixing it up nicely. Started off with a fuller length and then the slow delivery and the back of a length. Just keep the batters guessing. Doesn't allow them to line him up. 3 sweepers for the left-handed Umar Siddiq on the onside. Square leg mid-wicket and long on. Fine leg is up in the ring at 45. Huge gaps on that side. Pulling around the wicket. Let's see what Umar can do. Knocked him over. Looking to be fancy, Umar Siddiq. Lost his bail and lost his wicket. Ali, too good for him. Great bowling that, targeting the stumps, and did not allow anything
for Umar Siddique to be done, and he had to take this chance because he was 29 of 29. The length was there, but the key was that the direction of the bowler was within the stumps. And Umar Siddique in the end has to leave. And it's 2 for 73 now in the 11th over. Local boy Shadab Khan has made it to the middle. Bit of a stop-start tournament for him in terms of his injury. 301 matches at the age of 26. He's already been around for a while. His highest 91. The strike rate is pretty good. Looking to bat consistently up the order to make sure that average goes up above, because he's a better player than 18. Very rightly said, Shaji. The potential is there. It's Muhammad Ali. Straight away, long on deep. Well, this is chipped straight to Shoaib Malik at mid-off. Disaster for Lake City Panthers as their captain came in and just went. First ball wicket, and Shadab has to go on a golden duck. Well. Clearly was looking to play it on the up. Did he play it a bit early? It went aerial, and when it goes in that direction where Shoaib Malik is standing, you could start walking back. This is exactly what Shadab did. Have a look at the length of this ball. It was pretty full. I think Shadab not bringing his weight into the shot. First delivery, a bit of a sluggish start, and now he will have to walk back for a golden duck. This is disaster for Lake City Panthers. 73 for 3. One Pindi boy replaced by another, Mubassir Khan. 47 games. Once again, that average is on a lower side, so it is the strike rate, that highest of 34. He's a terrific red ball cricketer, but still yet to decode this format, both with bat and ball. His first task will be to keep Muhammad Ali off of a hat-trick. Not overly attacking Haris, just the one slip. 6 men in the ring on either side. Back of a length, solidly defended. Bit of a mix-up between the fielders and easily completed one. But what an over from Muhammad Ali. 11 done, 74 for 3. Stallions have their tail up now, and as they bring in Sadak, the left arm spinner, around the wicket to Haider Ali. Now, these are the two men who are going to carry the chances of Lake City Panthers, both in good form. In fact, Mubassir is the one facing, and this is a friendly full toss. Just driven down the ground for a single. Now they have to do a bit of a rebuilding job. And this is the wicket, the first one. After getting well set,
this is not the way to play. And then a straightforward half volley could have been played anywhere. And Shadab just hit it to mid-off. Shoaib Malik taking the easy catch. It was very full, half volley. Shadab would not want to see that replay again. But now it's time for Mas Sadakat to build some pressure and for Haris to get away with some cheap overs. Never ideal when you have to rebuild. Haider's role is very important now. Throwing it wider, Mas Sadakat. This time the length was fuller, so Haider couldn't cut it. Haider is going so well. Just once again, this dismissal, feet nowhere, just the casual push straight to mid-off, and certainly not the way that the first ball should be played. It was there to drive through the covers, or maybe straight down the ground. Shadab played a lazy shot. In a partnership, when somebody is going as well as Haider Ali is, then I think Umar Sadiq should have carried on along with him. Look at how he's almost leaning back. His front knee was upright. It didn't flex into the stroke. That means your shoulder can get over that front knee and you're able to control the drive. Good ball. Since it was the first delivery, so his movements weren't up to speed, slightly late on the shot. Yeah, but if you're lazy and a touch stiff, then you need to just play it with soft hands closer to your body. You don't need to push the first ball, and especially after being an experienced campaigner and also the captain of the side, one of the players where the team relies on. As the 12 overs are completed, it's a 79 for 3. तमाशाइयों की तादाद में इजाफा हुआ है ओवर्स के साथ साथ। इस मैच में आज आम तातील है हफ्तावार जुड़वा शहरों में। और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। हैदर जो हैं वो और ज़्यादा जोश दिला रहे हैं शायकीन को। मुबस्सिर ने पिछले मैच में अच्छा हाथ बढ़ाया था हैदर का। आज भी अगर उन्होंने अपनी टीम को यहाँ इस निकालना है कदरे मुश्किल सूरत हाल से तो उनका बराबर साथ देना होगा। लेकिन उस्मान जो हैं ये अभी तक बहुत ही अछूती बॉलिंग कर रहे हैं। ये कोई जो बल्लेबाज है वो नहीं पहुंच पा रहा इनके दिमाग तक। जी, और कप्तान हारिस उनको इस्तेमाल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक ओवर की ब्रेक मिली थी जिसमें मोहम्मद अली को लेके आए, उन्होंने 2 विकेट हासिल की। अब एंड चेंज किया है उनका, कमेंट्री बॉक्स एंड से आप बॉलिंग करवा रहे हैं तो हैंडी होते हैं ऐसे बॉलर के। कभी भी किसी भी एंड से बॉलिंग करवाएं तो वो कंट्रोल देते हैं इनिंग को। लेकिन एक बार फिर लेक सिटी पैंथर्स की नजरें हैदर अली की जानिब होंगी जो कि बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। 38 रन पर खेल रहे हैं। वैसे तो दानिश अजीज को आना है, माद भट्ट को आना है, वसीम जूनियर, उसामा मीर भी बल्ला घुमा लेते हैं, अरफात मिनहास भी बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन तारिक भाई जो दारोमदार होगा अगर इन्होंने 160 165 तक पहुंचना है तो उसके लिए हैदर अली को एंड तक जाना होगा, 20वें ओवर तक खेलना होगा। शोएब मलिक जो हैं ये मुसलसल इनको आगाह कर रहे हैं उस मुमकिन शॉट के मुतालिक जो हैदर अली खेल सकते हैं इनके सामने। ज़हीन क्रिकेटर हैं शोएब मलिक। हैदर अली आमतौर पर इस
इलाके को हदफ बनाया करते हैं। एक बार फिर पिच से ही रीड करने की कोशिश की थी, लेकिन गैप नहीं मिला। और तारिक भाई यही इम्तिहान है यहाँ पे हैदर अली का कि ये जो मुश्किल पीरियड है जहाँ पे अच्छी बॉलिंग हो रही है, क्या बॉलर को रिस्पेक्ट दे पाएंगे या ज़बरदस्ती को हिट मारने जाएंगे और रिस्क लेंगे। तो यही देखना है कि कितनी इंप्रूवमेंट आई है टेम्परामेंट में। कट शॉट खेल दिया, मिल गई गेंद। बिल आखिर उन्हें अपनी आई लाइन के बाहर अच्छा वार किया, बिल्कुल जो वो चाहते थे। 13 ओवर्स के बाद 84 पर 3। आसमान जो है वो कभी आपका दोस्त कभी दुश्मन हो सकता है, ये मैं नहीं कहता, ये सादी साहब ने बहुत पहले कहा था। और ये बल्लेबाज जो हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं। जब वो रावलपिंडी आते हैं तो जब धूप निकली हुई होती है, आसमान साफ होता है, तो फिर जाहिर है कि वो आपका दोस्त बन जाता है आसमान बैट्समैन का। लेकिन आज जो है सूरत हाल वो दूसरी है। ये अच्छा खेला, इस बार अपनी कलाई को इस्तेमाल में लाए, मोहसिन को आना पड़ा 2 रन का और इजाफा। जी हाँ, ज़रूरी है बैटर्स के लिए तारिक भाई कि जैसे आपने कहा कि जब दोस्ती का वक्त चल रहा हो तो फ़ायदा उठाया जाए उस दोस्ती से और मैक्सिमम रन्स किए जाएं। और यही यहाँ पे शायद हैदर अली भी कर रहे हैं। 42 रन पर पहुंच गए और क्या शानदार शॉट खेला था आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पे। और शॉट खेला, लाजवाब खेला है इस बार मुबस्सिर ने। और स्पिनर पर हिट करने के मामले में वो भी काम नहीं है किसी से। लाजवाब बैटिंग दोनों ही एंड से, बहुत ही खूबसूरत बैटिंग देखने को मिल रही है। ये जोन में मिल गया था, खराब बॉल कहेंगे, लेग साइड एश पे बॉल किया था जिससे घुमा दिया टांग रख के मिड विकेट की जानिब 6 रन के लिए। जितनी जान इनमें है आप खराब बॉल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मिस फील्डिंग है, दूसरा रन भी बनना चाहिए। हैदर अली ने फौरन ही आमादा कर लिया। एक ऐसा ओवर चाहिए था वापस आने के लिए। पूरी तरह रवानी में 10 रन बन गए हैं पहली 3 गेंदों में। और अब वो दबाव जो है वो माज सदाकत महसूस करने लगे। सूरत हाल की हरारत है। जैसे आपने कहा दबाव महसूस कर रहे हैं, फील्ड चेंज किया, एक्स्ट्रा कवर को बाहर कर लिया है और 3 फील्डर जो हैं वो कट पे रख लिए हैं क्योंकि यहाँ पे वो बॉलिंग करना चाह रहे हैं मुबस्सिर को। मुबस्सिर एक्स्ट्रा कवर बहुत शानदार खेलते हैं, लेकिन 2 रन यकीनी बन जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट इन 2 यंग बैटर्स की जानिब से। बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि हुसैन तलत थोड़ा स्लो हैं, इसलिए दूसरे रन के लिए जल्दी वापस आए और एक अच्छे ओवर को बड़ा ओवर बनाते हुए। देखिए पहले आसान 1 ही रन के लिए भागे थे, लेकिन जल्दी रियलाइज किया कि थोड़ा स्लो है हुसैन तलत और दूसरा रन आसानी से मुकम्मल किया। 23 रन की पार्टनरशिप हुई है जिसमें हैदर जो हैं ये सेकंड फिडल हैं और लीड यहाँ पर मुबस्सिर ने ली है। अच्छे स्पिन हिटर हैं मुबस्सिर, खुद भी ऑफ स्पिन बॉलिंग क्या करते हैं। पाकिस्तान शाहीन्स खेल चुके हैं मुबस्सिर। और ये अब आखिरी गेंद इस ओवर की आने को है। हैदर यकीनी तौर पर इनके पीछे पड़ना चाहेंगे। यॉक करा लिया खुद को, बेहतर खत्म कर गए इस ओवर को माज 97 पर 3।
हैदर अली को यकीनी तौर पर बहुत गौर से देख रहे होंगे असद शफीक और अजहर अली, जो पाकिस्तान के नेशनल सेलेक्टर्स हैं, और अलीम डार भी हैं सिलेक्शन कमेटी के एक और अहम रुकन। देखिए अपना होमवर्क जो है ये सेलेक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को T20 क्रिकेट में हैदर अली जैसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। T20 का जो पाकिस्तान, क्योंकि अब हैदर अली जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ लग रहे हैं पिछले चंद महीनों से, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर की जो बैटिंग है ये इतनी फाल नहीं है। ये पहले मुख्तलिफ टीमों से खेले, पेशावर ज़ल्मी गए, फिर कराची गए, लेकिन इस्लामाबाद का जो खेमा है उन्होंने सही मानों में वहाँ इनको सही एतमाद मिला है, जिसके बाद से ये आदाद हमारे सामने आ रहे हैं। 165 का स्ट्राइक रेट इस बैरियर टाउन चैंपियंस कप T20 में, और अब सबको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया रन्स के मामले में हैदर ने। ये बहुत ही बेहतरीन होता है कॉम्बिनेशन, अगर आप रन्स भी कर रहे हो, कंसिस्टेंट भी हो, और आपकी स्ट्राइक रेट भी इतनी बेहतरीन हो, जो कि हैदर अली की है। अगर हम सिर्फ इस टूर्नामेंट की ही बात करें, और जो शॉट मेकिंग है, जो क्वालिटी ऑफ शॉट्स हैं, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आई है हैदर अली में। खराब शॉट हमें खेलते हुए नजर आए, वैल्यू कर रहे हैं अपनी विकेट की। और ज़रूरी है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि सिलेक्टर्स जब आप मौजूद हो ग्राउंड में, जो कि यूजुअली ये सारे मैचेस ही कवर कर रहे हैं, ये तीनों सिलेक्टर्स यहाँ पे आते हैं, उनके सामने आप परफॉर्म करते हैं तो वो एक नेक्स्ट लेवल इफेक्ट डालता है। नंबर्स कागज पे देखना एक अलग बात है, और सामने परफॉर्म करना, कंडीशंस को देख के परफॉर्म करना, ये एक अलग बात है। और वो भी जानते होंगे कि यहाँ पे आसान कंडीशंस नहीं है बैटिंग के लिए, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, मुश्किल कंडीशंस है, फास्ट बॉलिंग अच्छी हो रही है, और वहाँ पे आके अगर आप सेलेक्टर्स के सामने इस तरह की बैटिंग करते हैं तो एक एडेड वैल्यू है। जी हाँ, यहाँ नदीम खान भी हैं, डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अलीम डार अपने पॉइंट्स ले रहे हैं। यहाँ क्योंकि पाकिस्तान की जो वनडे टीम है ये हम देख रहे हैं, वो उसमें सुधार आ गया। यहाँ पर बाउंड्री चेक जो है ये अंपायर जाएंगे उस तरफ। हुसैन तलत थे, इतनी सफाई के साथ गेंद को वो पीछे नहीं धकेल सके। या फिर धकेल के, जी हाँ, अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। एक रन तो यकीनी बचाया अपनी टीम के लिए हुसैन तलत ने। वापस आएंगे हम हैदर अली के ही टॉपिक पे। क्राइटेरिया तो सेट है तारिक भाई, बेस्ट अगेंस्ट बेस्ट खेल रहे हैं चैंपियंस कप में। एक बार फिर 2 रन की कॉल है, अच्छी रनिंग की है। पहला रन तो बहुत ही तेजी से लिया, दूसरा अपने लिए आसान कर लिया है मुबस्सिर ने। जहाँ तो हम बात कर रहे थे सिलेक्शन कमेटी की और पाकिस्तान टीम की इन दिनों जो फॉर्मेशन है उससे मुतालिक कि जो वनडे टीम है पाकिस्तान की, ये लगता है कि सही रास्ते पे चल पड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में हराना ये एक अल्टीमेट जो है किसी भी टीम का हदफ हो सकता है, वो पाकिस्तान ने कर दिखाया है अभी हाल ही में। और उस टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, वो बड़ी कामयाबी है। और जो T20 टीम है उसके मसाइल हैं, और ज़ाहिर है कॉम्बिनेशन के मसाइल हैं। पाकिस्तान को साइम अयूब के साथ जो है दूसरा ओपनर कौन होगा, वो सवाल अपनी जगह पर है अभी भी। मुमकिन है आगे चलकर रिजवान को टीम के लिए ऐसा बेहतर लगता है, ये लगता है ये कि ये शॉर्ट रन हो सकता है, या फिर है इनके बल्ले की तो जो है ये कहीं गई है लकीर के आगे। बहुत ही करीबी मामला है ये, थर्ड अंपायर को ये फैसला लेना है।
देखिए शायद उतना क्लैरिटी से आप इस एंगल से देख नहीं सकेंगे क्योंकि अंपायर साजिद जो हैं वो रास्ते में आ गए थे, तो टीवी अंपायर इम्तियाज़ इकबाल हैं, उनको ये फैसला करना है और ये अच्छा वक्त है एक छोटी सी मीटिंग कर ली जाए। मोहम्मद अली फास्ट बॉलर उबैद शाह के साथ समझाते हुए, शोएब मलिक भी मौजूद हैं और यही ब्यूटी है इस टूर्नामेंट की भी, चैंपियंस कप की, जहाँ पे मोहम्मद अली उबैद शाह के साथ खेल रहे हैं, शोएब मलिक मेंटोर भी हैं, खेल भी रहे हैं, तो जो आप ग्राउंड के अंदर सीखते हैं वो अलग होता है। शायद यहाँ पे बैटर को थोड़ा बेनिफिट देना चाहिए क्योंकि बहुत ही करीब है, बट स्टिल बेनिफिट जो है वो बैटर की तरफ जाना चाहिए। इम्तियाज इकबाल टीवी अंपायर हैं, यहाँ ये दोनों तरफ फैसला जा सकता है। अंपायर जो हैं ये कई दफ़ा जो लाइन है ये उनकी सवाबदीद होती है और उनने रन करार दे दिया है। अच्छा फैसला है, अच्छी अंपायरिंग है इम्तियाज इकबाल की जानिब से। हमने पहले भी देखा है कि जो बेनिफिट है वो बैटर को ही गया है और जाना भी चाहिए। 7 रन आ गए इस ओवर में, सारे बेनिफिट्स बैटर्स के लिए हैं। ये बात तो दुरुस्त है, बैटर्स गेम होके रह गई है ये। जहाँ पे इतनी और आसान चीजें दी हैं तो ये जहाँ पे जितनी एफर्ट मेहनत लगी हो बैटर की, यहाँ तो बेनिफिट थोड़ा बनता है। उबैद शाह अपनी पहली विकेट के मुतलाशी हैं। आज उन्हें खास से सवाल पूछे हैं। यहाँ पर आहिस्ता गेंद की जो बहुत बाहर निकल गई। हैदर अली अब स्कोर जो है ये कहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये अगला सवाल है कि पैंथर्स की टीम को हम जानते हैं कि इनके जो आने वाले खिलाड़ी हैं वो दानिश अजीज़, अम्माद भट्ट हैं, वसीम जूनियर अच्छे हिटर हैं, अरफात मिन्हास अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो स्कोर कहाँ तक पहुँचे तो ये सुख का ये सांस ले सकेंगे। देखिए इसका सारा दारोमदार जो है वो हैदर अली पे है। 40 रन पर जो कि वेल सेट हैं, उन्होंने काफ़ी वक्त गुजार लिया है क्रीज के ऊपर। आने वाले बैटर्स में दानिश अजीज़, अम्माद भट्ट यकीनन है, लेकिन आप ये नहीं भूलें कि 2 ओवर्स मोहम्मद अली के हैं और 1 ओवर उस्मान तारिक का भी है इन 5 ओवर्स में, तो वो आसान नहीं होगा उनको हिट मारना। स्पेशली मोहम्मद अली ने जैसे डेथ बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में, जो वेरिएशंस दिखाई हैं, जो कटर्स किए हैं, जो बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज की हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है डेथ ओवर्स में। तो अगर यहाँ से 160 तक भी पहुँचते हैं तो अपने आप की कामयाबी कंसिडर करेंगे। लेकिन फिर अगर हैदर अली खड़े रहते हैं तो वो 160 170 में भी ट्रांसफर हो सकता है। अभी 15 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 107 पर 3। वो 11वां ओवर जिसमें पार्टनरशिप टूटी थी 61 रन की और यके बाद दीगरे 2 विकेटें गिरी थी। उसके बाद से ऐसा लगता है कि एक चाल जो है वो ज़ाया की है यहाँ लेक सिटी पैंथर्स ने। ये हैदर की मौजूदगी में ही भेज सकते थे आज बैटिंग करने के लिए अरफात मिन्हास को या दानिश अजीज़ को पहले मुबस्सिर से। ये बहुत मुश्किल क्लियर किया मिड ऑफ को। यहाँ 4 रन के लिए अच्छा आगाज किया इस ओवर का। राइट और लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो और ज़्यादा परेशानियों का बायस बन सकता था बॉलिंग अटैक के लिए। लेकिन उस वक्त जो बॉलिंग हो रही थी वो बहुत मुश्किल बॉलिंग हो रही थी, तो आपको एक प्रॉपर बैटर चाहिए था। बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत स्किलफुल है मुबस्सिर भी, दानिश अजीज़ जो कि अच्छे बैटर हैं वो भी, लेकिन जो इन फॉर्म बैटर हैं वो मुबस्सिर ही हैं। और अगर वहाँ पे एक पार्टनरशिप जैसे कि अब इन्होंने डेवलप कर ली है,
38 रन की पार्टनरशिप, उसकी ज़रूरत थी। अब ये लॉन्च कर सकते हैं यहाँ से क्योंकि दोनों वेल सेट हैं। और दानिश अजीज, अमाद बट, शायद हम देखें कि अमाद बट को प्रमोट किया जाए क्योंकि वो बाखूबी बड़े छक्के लगाने के लिए माहिर हैं। से ऑन साइड में धकेला, 1 रन का और इजाफा। लेकिन अब इनको दोनों एंड से ही इनको वार करने की ज़रूरत है। हैदर अली, हमने देखा है मुबस्सिर कि हाँ जब बाउंड्रीज आ रही थी तो हैदर जो हैं एक कुछ देर के लिए सर झुका लिया था, लेकिन क्योंकि अभी बहुत बैटिंग इनकी बाकी है, अम्मा, दानिश, अरफात, मिनहास, तो ये जा सकते हैं अभी ये बॉलर के पीछे। खुश नहीं है हैदर अली, साइड स्क्रीन के सामने शायद कुछ मूवमेंट है, या शायद ये ही लॉन्चिंग पैड हो सकता है इस ओवर के बाद से। अच्छा शॉट खेला, इनटू द पिच गेंद की थी मोहम्मद अली ने। हैदर अली ने इंतजार किया और उसके बाद कट किया और अपना 50 किया 40 गेंदों में, और ये इनकी तीसरी निस्फ सेंचुरी है यहाँ रावलपिंडी में बहरिया चैंपियनशिप में। या बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आए। देखिए शॉट सिलेक्शन, यही फर्क है पुराने हैदर अली में और नए हैदर अली में। इंतजार किया स्लोअर वन का, प्लेस किया है, और ये जानते हैं कि अभी काम अधूरा है, इस इनिंग को फिनिश अच्छा करना होगा ताकि मोमेंटम जो है वो लेक सिटी पैंथर्स की जानिब रहे। इस बार हवा में खेल गए हैं, गेंद जरा सी स्लाइस हो गई थी बल्ले पर आखिर को, इसलिए नहीं पहुंच सकी बाउंड्री पे, लेकिन अच्छा ख्याल था गैप में खेलने का, ऑफ साइड में खेलने का, और यही फर्क आया हैदर में कि अभी ऑफ साइड का जो हिस्सा है उसकी अहमियत को भी इन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया। या वो सारा कुछ शॉट सिलेक्शन में आ जाता है कि आप कहाँ किस तरह अपने मजबूत एरिया को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे हिट मारते हैं, कंट्रोल से मारते हैं, और किस बॉल को पिक करते हैं शॉट मारने के लिए। तो यही फ़र्क है पुराने हैदर अली में और इस हैदर अली में, शॉट सिलेक्शन का। और अपनी बैटिंग को वैल्यू भी करना शुरू हो गए हैं, थ्रो अवे नहीं कर रहे हैं अपनी विकेट, और इसीलिए कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं। तीसरा 50 5 मैचों में बजा। वो अच्छा खेलने में कामयाब हुए, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने इस गेंद का रास्ता काटा, एक ही रन बन सका। अच्छा ओवर साबित हो रहा है, हैदर अली के पास मौका है अपनी टीम को यहाँ 170 के करीब पहुँचाने का। जाहिद महमूद को आज मौका नहीं मिल सका, इन आउट होते रहे लेकिन ज़्यादा, हालांकि बैटिंग आई नहीं, इसके बावजूद ये इन आउट होते रहे। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया है, पार्टनरशिप जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि हैदर अली मौजूद हैं, और आज बहुत ही बाकमाल इनिंग खेली है हैदर अली ने। वाकई एक पैंथर की तरह इन्होंने बैटिंग की है, टाइमिंग बहुत ही कमाल की रही, पावर हिटिंग भी ज़बरदस्त रही, घबराते नहीं है, दलेर बैटर हैं, जो जोन में बॉल करते हैं वो उठा के खेलते हैं, स्पिनर हो फास्ट बॉलर हो, इनकी इंटेंट में कोई फ़र्क नहीं आता है, बुरा बॉल करेंगे ये आपको हिट मारेंगे। शॉट सिलेक्शन भी ज़बरदस्त रही, अपनी टीम के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद 50 रन बनाए हैं हैदर अली ने। Yet another 50 for Haider Ali of just 43 deliveries.
He's been a sublime form and making sure that he can cash it on every opportunity provided. Early on it wasn't easy, but he kept his nerves and played it through. Good contribution by Mubassir as well, 28 of just 16. It's been a treat to watch. Usman Tariq now brought back an attack. Third 50 for this tournament. Salman Bhatt alongside me. Thank you, Marina. Yes, Haider Ali has come to the rescue of Lake City Panthers time and again in this tournament. Been brilliant with the bat. Every time has come in, has batted the situations, has done what was required of him, and he has got results for his team. Usman Tariq into his last and final over, looking to break the partnership. This is played beautifully over covers, over pitched and picked up. Haider Ali in this sort of form isn't going to miss out on such stuff. Haider Ali, well, he's more comfortable against Usman Tariq. In another game, he did take the attack back to him. On this occasion, pitched up outside off stump. And the best thing was he just waited for it to get the elevation and the distance. Just one bounce over the fence. It was great adjustment. That Haider Ali just waited in his position, allowed to the ball to just pitch and then went through with the stroke. Great hands in that shot. Once again heaves it, but straight to the fielder at mid-wicket, just the one to him. Now is the time to launch again. It was 70 for 1 once when they lost a couple of wickets. Then again the rebuilding process came in, and this is the stroke. And just have a look at how he maintained his distance of front leg and where the ball pitched and allowed the hands to go through. Basir sweeps it towards the mid-wicket fielder once again, not getting the timing. It's not easy in this chilly weather for the bowlers to come back and deliver straight away, because obviously they get stiff, the wind is blowing, and they just have to keep moving. Again, just waited. Got the elevation, might fall safely. Yes, it does. And while batting against Usman, it's also important to note that Haider and Mubassir have more range of shots. They can sweep, they can play through the offside, they can slog him, they can cut. So it gives them a little bit more cushion to both these batters to be more attacking against Usman Tariq. Straying down the leg will be a wide. They've been sensible too. If you just have seen how they've gone about the business against Usman Tariq, they haven't taken many risks. He's only given 20 runs and this is his final over. And that too with this 7 or 8 runs coming in this over. Once again, they just place him for an easy one and make sure that no wickets are given to him and they can attack the rest of the bowlers. So good strategy for this innings and for this partnership. Intelligent batting this. Yeah, they did play him out. Just waited for a bad delivery and went for it. One more delivery to go. Picked up with the angle, and it will sail away over for a maximum. Lake City Panthers, 17 gone, 136 for 3. They're enjoying it, getting some entertainment from Haider Ali and Mubassir. Partnership of 63 of just 37 deliveries. And they've accelerated brilliantly after the 10th over from Muhammad Ali picking up double wicket. After that, it's all been Lake City Panthers. And we can see Mr. Shiraz on an important call.
The crowd has come in despite very chilly conditions, and this is very, very encouraging to see. And this is not a sight for me and Shaji, because the more you show these things, we start to feel hungry. But it's good for the crowd to have some hot chips in this chilly weather, as things get interesting towards the end as we come closer to the launch. With Haider Ali set on 67, there's every chance that he can get to 100, and that should be great for him and for the tournament. We've just had one from Hussain Talat, and if Haider Ali can get there, would be wonderful. Amer to continue. Down the... Oh, trouble! Trouble, that's not what Lake City Panthers want. It's mighty close for Mubassir. Mubassir seemed to have no idea where the ball has gone, and he just instinctively started to run. And the ball fell close to the bowler, who just picked it up and threw it towards the stumps, hit directly. And there, I think he's gone, and gone by some distance. That is unfortunate, but at the same time, you ask yourself a question: if you don't know where the ball is, where are you going? That's the worst way to get out. Mubassir was well settled in with Haider Ali. Lake City Panthers, one down for them. Good partnership it was brewing, but that's exactly what Allied Bank Stallions wanted. Something special, something extraordinary, but pretty ordinary from Mubassir. He's disappointed, and so is Haider Ali. Gone on 30, you can see the disappointment on his face. 4 down on 136. Danish Aziz, he get his opportunity to bat. Doesn't have a lot of time, needs to go straight away. Unlucky for Mubassir. Wouldn't say unlucky, but not good game awareness though. Nonetheless, he's on strike now, Danish. Can bat highest 72, strike rate of 125, averaging 25. Can go big. Has that sort of talent. Straight away off the mark. It's good for Haider to be on strike. And that is what happened in the middle for Mubassir. Once again, just have a look. The ball has just gone straight back to the bowler. And Mubassir, well, he knows there is no connection of the bat. It's amazing to see the batter run like this. And then, even at this moment, his bat is out of the crease. Still, I have to just say unlucky. Once again, this is hit, and this is big. This is out of the ropes. Another 6, brilliant from Haider Ali. It was offline on the pads, asking for trouble. And Haider Ali, in sort of form that he is not gonna miss out. And Amer is paying the price for being offline. He can play that shot all day long. Like throwdowns for him off the pads. Whipped it over with impeccable timing. Amer, he has to be spot on, especially in the death overs. Haider is well settled on 73. He will take the charge. The margin of error for Amer is very small. Straight up in the air. Fielder getting underneath. And taken. Shoaib Malik it is. He's not going to drop these. And a big breakthrough for Allied Bank Stallions. Well, Amer has the last laugh. Even after smashing him everywhere around the ground for 6s and boundaries, he gets the wicket and celebrates it like Haider Ali did nothing. That's strange to see. But Haider doing a fine job for his team. But they really needed him to push them
more towards 170 and 80. Unfortunately for him, he has to go. Underneath the ball was the very safe fielder, Shoaib Malik, who had no problems. 73 he got of 49, and it's 5 for 143. Ahmad Butt walks in, back-to-back wickets for ABL Stallion, has put some sort of stop to Lake City Panthers' momentum. He can hit big as well, 145 in strike rate. On strike facing Amir, who was delighted to send Haider Ali back in the hut. Plenty of protection towards on and off side of the boundary. Right on money, just a single taken. That was a big wicket. So it's now happened twice in this innings when two batters are well set and their wickets have fallen in quick succession. Haider Ali again goes for the wild hoik over mid-wicket. The length wasn't there, offering a catch to Shoaib Malik, who you hardly see drop a catch. It's 144 and they would love to get to 170 plus after such a good knock from Haider Ali and a decent partnership. Twice the rhythm has been broken. The Stallions have been right back, picking up wickets. This one again, a shorter one, not timed. Will just get them the one run as 18th over now finishes, and Lake City Panthers are 145 for 5. Good over from Amir, getting 2 wickets. And this is something to look forward to. Barrier Town Properties going global, and they are developing a world-class gated community in Dubai South. 2 more overs to go. Bad to bowl the second last over of the game. Amir picked up 2 wickets, giving away 9 runs in the previous over. Fuller pitched up, and Danish hasn't timed it quite nicely, but will pick up a boundary. Ubaid Shah coming around the wicket and offering fullish length to Danish, who just plays it over point. Just have a look at this stroke. Opening the face of the bat, played very intentionally. Intelligent stroke that. He knew where the field was, so he just slightly opened the face of the bat and played it in the gap. Well crafted stroke this by Danish. He needs to be around till the end. We know he can hit the big ball as well. And this one is turned around off the hips as the fielder makes good ground, but Danish, he'll be late. The first run should be taken much quicker than this. Yeah, I think Danish probably was thinking that it got away with another boundary. Slow to took off. It was nicely done off the back foot. Not running in a straighter line, that added more problems to that running. I need to be quick, looking for and pushing for the second one. 5 already of 2 deliveries into this over. Ahmad now on strike. Got long on, long off, deep mid-wicket, deep square leg. Third is inside the circle. Ahmad probably is more comfortable going down the ground or into the leg side. So Bad has to be spot on with his line and length. Short and wide, wild swing down the ground, but missed it.
Well, I wonder sometimes the batters, they just refuse to see what the field positions are. This was short and wide outside the off stump with the third and the point up in the circle. So there was an opportunity to just hit it through or either side of the fielders to get a boundary. But Ahmad opted for an option where he had deep long on, deep long off, deep covers, and that didn't make any sense. So it's always a good idea to just have a look around and see where the fielders are. Down the ground he goes this time. Pitched up, and it was in his zone. Poor bowling from Ubaid, but Ahmad has made sure it travelled all the way. Well, I don't know who to say to whom, what to say to whom. It's now bowled into the slot. And Ubaid Shah has bowled one right in the slot. Perfect delivery. And Ahmad Butt plays a brilliant stroke over his head for a 6. Short and wide, but too wide on that occasion. We'll have to bowl it again. We all know what the strengths of Ahmad Butt are. As a bowler, you need to do your homework. You need to have a discussion with your senior pros what the plan should be. Marina, one very common practice in international cricket is rarely seen here is that the point fielder goes deep to the boundary, the cover comes towards a bit towards the extra cover, and the bowlers goes around the wicket and bowls across this full deliveries, which are very hard to hit to the boundaries. And that planning we haven't seen much in this tournament. As this one was on the legs, and I think Ubaid Shah is lucky that it's just one leg by. I think it also has to do a lot with how confident you as a captain are with your bowlers, because you can give them a plan, but execution has to be on spot, especially in death overs. I'm not sure if Ubaid is that accurate in terms of bowling those wide yorkers. I think we haven't seen that happen in the early morning practices routines as well. So that might not be the thing that they have, planned to execute. But it can be very useful. As this one is again a length ball, and Danish hits it big, high and long. 6 runs. Great stuff this from Lake City Panthers batters, and Ubaid Shah providing length has to suffer. It's a huge over, 19 of it. It's 164 for 5. Chilly Sunday morning, but it doesn't matter because everyone is enjoying the display provided by Danish. Ubaid Shah not really judging and having the idea of where to bowl at death overs. Length provided. Just deep into the crease. Have a look at that. A lot of bottom hand coming into play. It's one of the signature shots of Danish. Muhammad Ali to bowl the ultimate over. 19 of the last one. He has to do some damage control. Full toss. Straight. It's not easy to put them away, but Ahmad Butt, as expected, he went down the ground and straight into the hands of the fielder. Well, this shot just reminds me of my dear friend Ali Yunus talking about hitting the 6 in the gap. If you're opting to play a big shot, why don't you consider a gap? So the fielder has to make some effort. And this was a full toss. Again, could have been hit in multiple areas, but straight down the throat of long on, because he just thought, after watching the full toss, that it's 6 written all over it. Not to be, has to leave for 7, 164 for 6.
Mohammad Wasim Jr. He can hit big as well, but he's up against an experienced Muhammad Ali. Getting wicket of Ahmad Butt on the first delivery of this over. 5 legal deliveries to go. Into the slot. Whipped away, would be looking to push for the second one. And easily done. That's some good bowling. Ali's plan seems final. He is going to look to bowl Yorkers or maybe even low full tosses, which are difficult to hit. Just have a look at this Ahmad Butt stroke again. He just was thinking 6, nothing else. At times, you just have to think in a way where what are your second options? Not to be. Presents the opportunity to Wasim Jr. Once again, beautifully bowled. Change of pace, I guess, and the batter had nothing. This is great from Ali. He's been on target this over. 3 balls bowled. He's picked up a wicket and only given away 2 runs. Yeah, change of pace, great direction. And in the end, the batter getting into a tangle. That is what premeditation can do to you. If the ball isn't where you were expecting, you can end up in a pretty funny position. Deep in the crease, flashes it hard, but will just be a couple. That's good bowling. Muhammad Ali is nailing those Yorkers, not making it easy for either of the batters to go big. Osama Mir all padded up. Had a good tournament, Muhammad Ali, so far. 3 of 33 versus Panthers. Picked up 1, giving away 24 versus Lions. Wicketless against Marhors, giving away 30 runs. 34, picked up 2 wickets against Dolphins. It's 2 more deliveries to go. Bowled them, cleaned him up. Change of pace, perfect length. Wasim Jr. was devoid of ideas. Brilliant. Simply brilliant from Muhammad Ali. Just aiming for the stumps, bowling full. And being very accurate with his plan. No problems there with the front leg. Front foot is right on the crease, half and half. And just have a look at this slower delivery. He's way too early. And the ball has arrived late. And he's got to go for 4 runs that he got of 4 deliveries. 7 for 168. Osama Mir will have to face the last delivery. Muhammad Ali, what a brilliant over. Just giving away 4, picking up 2 wickets. Oh, nearly the 3rd one. Great bowling. This is how you should be bowling at the death overs. Great finish from Muhammad Ali. 2 wickets in this over. Ends up with 4 wickets, giving away 28 runs in his 4 overs. And this has got him to the leading wicket taker position of this Barrier Town Champions Cup T20 2024. 10 wickets total to him, and he's leading the chart, the bowling one, as Osama Mir couldn't do anything of this last delivery because he didn't know much about it. A leg cutter, perfectly disguised. 20 overs finished, and Lake City Panthers, once they looked good to cross 180, end up on 168 for 7. You have to give credit to Muhammad Ali, especially. That's the last one. Was ready to hit big, but again, impeccable line and length and good change of pace. That's the control you need to have as a fast bowler bowling in the death, but have to give courtesy. Muhammad Ali, ABL Stallions have managed to pull some momentum back
Lake City Panthers were looking really good when Haider Ali was out in the middle early with Umar Siddique and then with Mubassir. That's how things unfolded. Umar gone on 29. Sharjeel couldn't really capitalize the opportunity. Haider Ali yet again scoring third 50 of this tournament, ended up scoring 73 runs. 30 for Mubassir. Danish on 13 managed to post 168. And here is the bowling card for Allied Bank Stallions. And Muhammad Ali, pick of the bowlers, 4 for 28 of his 4. Amir 4 overs, 34 for 2. Both the opening bowlers getting 6 wickets and the rest couldn't manage even one. Ubaid Shah, expensive, 38 of his 4. Shoaib Malik, just the 1 over, 13 runs he gave Usman. 4 overs, economical again, 27 for no wicket. And Maaz, 3 overs for 26. Restricting the Lake City Panthers to 168. Well, now let's get going with Shah Faisal, who's got the player of the moment, Muhammad Ali, with him. थैंक यू मरीना. मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली. बहुत ही शानदार बॉलिंग की इन्होंने. अली 4 विकेट हासिल किए और बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट और फिनिश आपने किया. जी जितनी देर तक आप बेसिक्स को अच्छा करते रहेंगे उतनी देर तक मेरे ख्याल में आपको T20 में सक्सेस मिलती रहेगी और मेरी कोशिश यही थी कि जो मेरे बेसिक्स हैं मैं उनको ठीक करूं. और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेल होता है T20 क्रिकेट में, आप देख रहे हैं यहाँ विकेट्स ऐसे हैं, खासतौर पे अगर आप टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं तो आपके कैप्टन की एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट होती है. थोड़ा वो इनसाइट दीजिए. देखिए अभी तक पिंडी के पिचेस जो हैं वो टोटली डिफरेंट खेल रहे हैं. किसी दिन फर्स्ट टाइम पर बॉल स्विंग करता है, सीम भी होता है, और किस दिन पहले जो हम टॉस जीतते हैं उस दिन कोई मूवमेंट नहीं होती. तो ये जितना आप अडेप्टेबल रहेंगे कंडीशंस को देखते हुए उतना अच्छा रहेगा. और बैटर्स की गेम है T20, आपको पता है वो बॉलर्स के पीछे जाते हैं. जो अपने बैक ऑफ द हैंड जो स्लो डिलीवरी है, वेरिएशंस हैं, वो किस तरह डेवलप की और कितनी मेहनत से ये परफेक्शन आई? देखिए जितनी ज़्यादा मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छी करता रहूँगा और जो मेरा प्रोसेस है मैं उसको अच्छा रखूँगा तो मेरे ख्याल में मैचेस में मुझे उतने ज़्यादा जो सक्सेस या विकेट्स हासिल करने का जो रेट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा. और जिस टारगेट टोटल पे आपने रिस्ट्रिक्ट किया उन्हें, क्या सोच रहे हैं हाफ टाइम पे? मेरे ख्याल में बॉलिंग हमने अच्छी की, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम इन्हें थोड़ा और जल्दी रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे. अभी भी हम कह सकते हैं कि शायद हमने 15 से 20 रन जो हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा करवा दिए, लेकिन T20 है तो इसमें इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं. लेकिन अपने बैटिंग यूनिट को देखते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि हम इस टारगेट को आसानी से चेस कर लेंगे. चले अली, आपने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की. Congratulations और all the best for the rest of the tournament. And back to you guys upstairs in the comm box. What a great spell of bowling from Muhammad Ali. Has done some damage control and put brakes on Lake City Panthers. Well, they started off really well. Umar Siddique and Sharjeel, they were the opening pairs. Umar Siddique was really good, coming in with the sublime form. Sharjeel, his troubles continue as he tried to force the shot. Easy catch to Muhammad Ali. Haider in a sublime form. It's a delight to watch him off the back foot, coming down the track, hitting big sixes. He managed to put up a good partnership with Umar Siddique. Yes, and this partnership once looked that they will bat through and get to a big total, but wickets kept falling at the other end. And as this happened, Umar Siddique went for a very extravagant shot, and then Shadab came in and a soft dismissal, this offering a straight catch to Shoaib Malik. Once again, the rebuilding done by Mubassir and Mr. Consistent Haider Ali, who scored yet another 50 and kept batting brilliantly. Unless this happened, once again, a mini collapse, which started via run out. Haider Ali kept going with his top-notch stroke making, unless this came across. A big shot which spooned up in the air, and underneath was Shoaib Malik. Then Ahmad Butt came in, smashing one over the head of the bowler, and then Danish hitting big. Ubaid Shah getting hammered, and in the end, Muhammad Ali coming in, picking up wickets, being very economical, and bowling great slow ones, which the batters had no clue about. In the end, only managing 168, Lake City Panthers will now have to defend as Allied Bank Stallions look to get to 169. We'll take a short break and we will join you for the chase.
ये देखिए एक और लंबा छक्का हैदर की जानिब से। Knocked him over. और अपना 50 किया 40 गेंदों में। तीसरी लिस्ट सेंचुरी है यहाँ रावलपिंडी में।
Welcome back for the run chase. This is match number 11, Allied Bank Stallions taking on Lake City Panthers, live from Rawalpindi Cricket Stadium. Right, this is what happened in the first inning. Lake City Panthers been put in bat for by the Stallions. It was Haider Ali show all the way. Spectacular inning of 73. Was well supported by Mubassir, who ran himself around the 30, 29 runs for Umar. But surely the star of the show was Haider Ali for his magnificent 73 runs. Right, Haider Ali was it at its very best. Some glorious cover drives, some excellent power hitting. It's been magnificent. The way he's transformed in this tournament is just excellent. His pick-up shots and the way he has shown the game awareness. The shot selection has been great by this youngster, finding himself in this tournament. That is such a heartening scene for Pakistan cricket. Marina Iqbal, as far as the bowling is concerned, it was all Muhammad Ali. Yeah, brilliant bowling. If anyone is watching, that's the way how it's done at the death overs. There was a crucial time because Allied Bank Stallions were leaking runs, but Muhammad Ali, he was on top of his game with slow ones, perfect line and length, impeccable, picking up 4 wickets, 2 for Amir, and the rest went wicketless, but some spectacular bowling from him. 169 the target. Ma Sadakat, a very talented young batter, 156 runs, strike rate of 136, and already has a 50 to his name, highest of 82. And his partner on the other end, another very talented batter, Yasir Khan, has shown some form. 350s and 100 at this level already, 763 runs. With strike rate of 134, very impressive, Yasir Khan. Yeah, he has potential, but he needs to play a big innings. Muhammad Umar was expensive in the previous game, but has the potential with the new ball. Economy slightly on a higher side, 9.36, averaging 35. Starts with a slip. Yasir and Maz, one of them needs to go deeper if they want to chase this total down. Muhammad Asif, the on-field umpire, says, let the chase begin. He's appealing for it. They're all appealing for it. Wide signaled. Oh my God. What happened there? They were not on the same page, surely. There was a definite sound. But umpire Muhammad Asif thinks otherwise, and Shadab is adamant that the ball did hit something. He's furious. He thought that's out. There was a noise. Off the pad, maybe. Off the pad, yes, off the pad. Just give it to Muhammad Asif, the umpire. This is a good decision. But off the pad, wide signaled. Everything is happening. It's okay. He's got it right, as far as the appeal is concerned. Wonderful. Great comeback. Yeah, we've seen today the conditions are conducive for fast bowlers. Early on, Amir and Muhammad Ali, they were getting some movement off the surface, and now Umar with a good corridor. That's the corridor he needs to be bowling and be consistent. Yasir, he's really good off the back foot. Just keep that in mind. Don't give him any width. Shadab on the background, he was furious. Not happy at all. Probably he'll go back, see the action replay. Will realize. Oh no, straight into the hands of
Wasim Jr. who makes a mess of it and drops a sitter. It's not working for Panthers. That was a dolly. Wasim Jr. caught napping there. Straightforward regulation catch. Put down. Well, he's better than that. Just trying to play on the up. Yasir just tripping a little bit in the surface, but have a look at that. He was late to react, and that's why he had to take few steps backwards. Not a good technique, but should have been first blow for ABL Stallions. He's normally a very good fielder. Wasim Jr. very fit, catches them well. Can happen to anyone, even you, Marina. It's off the mark straight away again. Wasim Jr. is in the limelight. Well, funny is the game of cricket. If you're not 100% in the field, and by any chance it's your unlucky day, the ball will follow you. Wasim Jr., he's much better than that. Just chipping it, trying to work it on the onside. Had a hand to it, but was late to react. That's the only problem. Chin up, young guy. You got a whole match. Not quite timing it, but still will get to the other end. Yasir, tentative, cautious. Lots of drama in the first over already. A huge appeal, drop chance, a misfield. Ball beaten outside the off stump. Excitement. That's the second name for T20. That's how things started. A little bit of miscommunication. Haris was ball watching. Well, that's the last thing you want to run out in the first over. Add confusion to it too, to the drama. No timing, no pace. .169 the target. They're a huge batting side with the likes of Mohammad Harif's inform Hussain Talat. Mohammad Mohsin showed skill in the previous game. Mr. Shoaib Malik also in the side. They would fancy chasing down this, but they'll have to grind, they'll have to work it their ways. 169, still not a bad total. And we've seen that the batters are having a bit of a struggle in playing shots more frequently and more effortlessly. Modern day batting. He kept it tight for five deliveries, and the next one comes down the track. 4 none after 1. It's a double treat for everyone who's come to the stadium. There's another game lined up. Very good game in our hands. UMT Marcos taking on Nurpur Lions. Great cricketers in those two sides. Game to watch actually, with Nurpur Lions picking up their momentum. 99 wickets for Ahmad Butt in his 88 matches. 4 for 27, the best. Sleep in place for him. Third up in the circle. There's a deep point in place and a deep square leg. Yeah, the surface, as a batter, you need to be just that careful. Don't throw your bat away. Just keep it close to the body. Whoever has done that, including Haider Ali, we've seen that initially he was struggling. It just grips a little bit on the surface, and it's always better to allow the ball to come near to your body, and then you can time it. Runs are there. Well, your shots are there, but you just have to time your shots. That's a boundary. Not very intended, but will get it. Yasir Khan just forcing that towards onside.
and gets the result on his favour. It's a poor delivery from Ahmad. Has everything towards the offside. You got a slip in place, you got short cover, and then you're just dragging it short, straighter onto the pads. Easy pickings with 45 in. It was a definite boundary. Yeah, you make a good point when you say you have to time it rather than force it. I think Haider Ali is a prime example throughout the tournament, the way he's batted. Timing, yes, and shot selection. Game awareness too, in my opinion. Change in field, slip comes out, and is placed at mid-wicket. Good run, very good run, putting pressure on the fielder, running straight away. I'm not really sure why Shadab moved himself from the slip to short mid-wicket. They're chasing 163, but again, it's not an easy surface. And if you keep your line and length outside off stump, don't allow Yasir to free his arms, I think it's more conducive conditions for the bowlers to pick up wickets. And you're not going to probably contain these runs. You need wickets up front. Just keep the attack going on. Especially with the new ball. Oh no, confusion. It's back on time. I think the plan is just to frustrate them, keep it tight within the stumps, not looking for wickets, dry up the runs, force them to make a mistake. With the field setting, it suggests that. Yeah, just wanted the single straight away. Mars, Wasim Jr. on the receiving end, did well. A good loud call in time by Yasir. He's picked that one. That's a nice hit. And maybe just bouncing before the ropes to go to the boundary. Signs of aggression from Mars. Denied a single by Yasir. He was ready to hit that for... Didn't went for a maximum, but for a boundary. Mars just again dropping it short. Mars had ample time to reach it. Still checking the boundary. No, it went all the way for a maximum. That's a great result for Mars. The length, he picked it up beautifully. "11 runs off the over. A dot will end the over from Ahmad Butt. 2 gone, 15 for none. I love this. They've come in numbers to watch these big boys. All three will be in action. One is at the moment, and the remaining two later in the day. Oh, that's a thumping shot. That is fantastic from Yasir. Back foot player he is, they say. That's the area, Yasir. Anything short and wide, he'll put you away. He'll punish you like he did on this occasion. Umar was quite decent in the first over, pitching it up, but have a look at that. Just stayed there, played it right underneath the eyes. Right out of the middle of the bat. Change in field straight away. They've got deep point now. Third coming in the circle. Stand and deliver, he says. Oh, no, that's a biggie. That is marvelous from Yasir. On the other side of the pitch this time. Poor bowling from Umar. Overcorrection.
both in line and length this time, straying down the leg, Fuller onto the pads, and Yasser is too good to put those away. And they need to have a plan. Execution has been poor so far from Lake City Panthers bowlers. Have a look at that. Just planting that front foot. Bottom hand coming into play. Full follow through of the bat. That was a delight to watch. Strong wrists also. Makes it look so elegant. Comfortable. That's a good comeback by Umar. Got to be within the stumps. If it's not swinging for you, that's the best you can do. But Yasser, it's been magnificent in this over. Different sides of the crease. He's played some quality shots. That shows that he's got the range. The first one through covers. Okay, later. Right, first one through covers, stand and deliver. The next delivery onto his pads. Great use of the wrist. And all the way. Quality. ABL Stallions are on a roll. Forces it. Gets the edge. Maybe not quite from the middle of the bat. Will still get a couple of runs. Yeah, as a bowler, you need to execute the plans given by the captain. And yeah, Umar is actually making things difficult for Shadab because he's not bowling according to the field. They've got deep point. The idea is to bowl outside off stump, slightly on a hard length or shorter length, especially to Yasser. But Umar has been struggling to do that in terms of line in particular. 12 already of this over, and they're off to a flyer. Lightbank Stallions. 2 more deliveries to go. Yasser. Now for Yasser, they've brought that deep point in circle. The change of plans. Let's see if Umar can bowl according to the field given. Slower bouncer. Good comeback. Few words also. Is it to the wicketkeeper or to the batter? That's the question. Yeah, to the batter. But all in friendly way. All smiles. Right, Marina Iqbal, just a question for you. In these conditions, we've seen the fast bowlers getting the help and the assistance from the pitch. Panthers starting off with a medium pacer. Ahmad Butt from the other end. They've got Wasim Jr. playing, yes, but he's usually bowls with an old ball. They've got Ali Raza sitting at the bench. Do you agree with the selection that they have, this playing 11 with Ali Raza sitting at the bench? I would like to see Ali Raza in action. He did well. He played a couple of games, delivered well with the new ball. He's a very smart operator, young but beyond his years. So I would definitely want him to see a quick single to end the over. There's a definite question there in terms of selecting the playing 11. 1 to end the over, 3 gone, 28 without loss. Yeah, on right top corner, Zishan Zamir made his name early on in his career, but then lost his way through injuries. Really looking forward to see him back whenever he is ready, of course. Nice jacket, by the way. You always have an eye for jackets, looking all over, picking from crowds and players. Let's hope you get one from any of the players. I like good vibrant colors, orange and black for Stallions. Mubassir, 15 wickets. Orange with black. Oh, he's gone for it. He's given it out. Very first delivery. Aggression from Mubassir. Showing the way to Yasser. That's where you need to go now. That's the first one for them. The change has worked for Lake City Panthers. Mubassir was brought in
And Yasser has to take the walk back, sent by some aggression, as you said. First delivery, he went for it. Not sure if that was a smart shot on offer. But Mubassir is always keen. Into the surface he bowled. And he was in no position to play that shot. No eyes on the ball, and he has to pay the price. Was off and running. Yasser gone on 20. Allied Bank Stallions 1 down on 28. Good change by Shadab, bringing in the off spinner, and straight the results are shown. Question mark on the shot selection, yes, from Yasser. Was it needed? As it brings out Haris, the captain. Good battle in our hands. There's a bit of aggression from both sides. 2041 runs. That's the sort of a game, Marina, you want to see, where everyone is looking to win. No matter what happens, there is aggression from both ends. Yes, definitely. No one is there to lose the game. Everyone wants to be on top of their game. And Mubassir, as we know, he is a bit of a character. Slammed hard. There's a protection, but it will pick up the gap and a boundary. Haris up and running with a 4. That's how he plays. Second delivery he faces. He smacks that one to mid-wicket. That's where he likes it, off spinner. Down the track. In the gap and a boundary to follow a boundary. Well, this was missing from Haris. In the previous game, he initially took his time, but right on attack, especially against Mubassir, I think he's not happy as a captain because Mubassir had the word with Yasser. Straight away, dancing shoes on. A big heave over mid-wicket and picked another boundary. He means business. You know what they call it when you've got a bowler bowling in your favor? Loot low. I think that's what they're doing. Again, great wrist work. Not quite the same result, but will get a couple of runs. He's looking good, Haris. Good start for him. He's here because of this. Not a good shot selection from Yasser. You can see he didn't keep the eyes on the ball. The length was slightly shorter. You're facing the first delivery. You could have played it off the back foot. Forced that shot and paid the price. 1 to end the over. 4 gone. Allied Bank Stallions 39 for 1. एलाइड बैंक स्टैलियंस की टीम खेल में आगे है। उमर आज बदकिस्मत रहे, इनको जल्दी विकेट मिल सकती थी लेकिन कैच गिरा दिया गया। वसीम जूनियर की जानिब से अपना तीसरा ओवर करेंगे। आसान काम नहीं है मुसलसल 3 ओवर करना पावर प्ले में। इससे चलता कर दिया, बिल्कुल आखिर में उन्होंने डिफ्लेक्शन की और 4 रन बना लिए। हारिस ने मौका नहीं था यहाँ पर उमर सिद्दीक के पास विकेटों के पीछे। सलमान भट्ट हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। और हारिस ने बड़ी जहानत के साथ इस गेंद को खेल दिया क्योंकि थर्ड ऊपर थे और
ऑफ स्टंप के बाहर ये लेंथ गेंद, हालांकि इसी टूर्नामेंट में एक बार यही शॉट खेलते हुए कीपर के हाथों कैच आउट हुए, लेकिन अपॉर्चुनिटी थी और अच्छा इस्तेमाल किया और इसकी वजह से अब थर्ड को वापस भेजा जा रहा है और कवर के जो फील्डर हैं वो वापस सर्कल में आ गए हैं। बेदिली के साथ हारिस दौड़े, मां सदाकत ने दरअसल उनको उकसाया रन लेने पर। अच्छी गेंद थी, विकेटों के बीच लेंथ भी अच्छी थी और ये बड़ी अच्छी तब्दीली है हारिस में जो हम इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं। पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में हारिस खुद ब खुद अपनी विकेट जो है वो गंवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ा ही खुशाइंद एटीट्यूड उनका बैटिंग में है कि वो वक्त ले रहे हैं और हालांकि वक्त ले रहे हैं फिर भी इनके स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और इनकी शॉट सिलेक्शन भी बेहतर हुई है। 7 गेंदों में 16 रन्स पे खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ खेलते नज़र आ रहे हैं, जो कि एक कप्तान के शान निशान लगती है चीज़। ये बहुत ही अच्छा चेंज है। जैंक्स जब्त आया है इस साल पेशावर के लिए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के भी कुछ मैचेस खेले हैं इस टूर्नामेंट से पहले, और जब आप रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो ये खुद पे भी काबू पाना सीखना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, ये बड़ा ही एक ज़रूरी आंसर है इस खेल का कि आप अपनी टेम्पटेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स इसकी नज़र हो जाते हैं। तो हारिस ने अच्छे टाइम पे इसको तब्दीली की तरफ गए हैं, क्योंकि ये जिस तरह के प्लेयर हैं तो 1-2 अच्छे ओवर्स में मैच का नक्शा बदल सकते हैं। इस बार फिर सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेला है, बहुत ही शानदार रनिंग और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ये दोनों बैटर्स की। क्रीज पर पहुंचते ही आज उन्होंने बॉलर्स को हदफ बनाना शुरू किया। मैदान जो है जितना भी बड़ा हो इनके लिए कम पड़ जाता है जब ये टाइम करते हैं। स्ट्रोक्स की बहुतात है, विकेट की दोनों तरफ खेल सकते हैं। इंतहाई मौजूद क्रिकेटर T20 के लिए। एक चीज़ और ये है कि ये जो अपने दोनों ग्लव्स उतार कर ये एक हाथ में पकड़ लेते हैं, इससे बिलाशुबा भागने की जो स्पीड है उसमें कमी आती है, और इसमें जो आपने टर्न लेना है बैट को क्रीज के अंदर लगाने के बाद दूसरे रन के लिए, तो इसमें डायरेक्शन भी आपके चेहरे की जिस तरफ बॉल गया उस तरफ होनी चाहिए। तो आप दूसरे हाथ में स्विच भी नहीं कर सकते बैट को अगर आपने एक हाथ में ग्लव्स पकड़े हुए हैं। तो ये वो चीज़ है जिसको हारिस को अवॉइड करना चाहिए, और देखने वालों के लिए भी एक राइट जो चीज़ है करने वाली, जो सही तरीका है उसका इल्म होना चाहिए। ये भी एक बार फिर थर्ड की तरफ खेला और अच्छी एग्रेसिव रनिंग कर रहे हैं दोनों। वो देखिए ग्लव्स एक हाथ में है, इससे कई बार आप उस तरफ नहीं देख सकते जिस तरफ से थ्रो ने आना है, और अगर कई दफ़ा बैटर्स को भागते हुए थ्रो भी आके हाथों पे लगती है तो एक कप्तान और बल्लेबाज को इंजरी भी हो सकती है। यहाँ ये बहुत अच्छा सबक है जो हमारे यंगस्टर्स जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं, और अब इस बार ऑन साइड में अपने बल्ले को स्विंग करने चले गए थे, एक ही रन मिल सका। खासे फाइन वहां पर मौजूद हैं उसामा। इस ओवर में बने 9 48 पर 1। ये कम ये ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है कि स्पिनर्स जो है वो जिस्मानी तौर पर ज्यादा ताकतवर हो फास्ट बॉलर्स की निस्बत एक ही फ्रेम में। जी हाँ, इब्तिदा के दिन है, ये दोनों फास्ट बॉलर्स टीन एज में हैं, यंगस्टर्स हैं, और मेरा ख्याल है कि साजिद इन्हें यही कह रहे हैं कि यार थोड़ा खाया पिया करो, आगे तुम लोगों का काम बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। वसीम जूनियर आ गए। ये
अच्छे ताकतवर फास्ट बॉलर हैं। अगर आप माजी में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को देखें, वसीम भाई, वकार भाई, शोएब अख्तर, मोहम्मद समी, उमर गुल, वहाब तक जितने भी फास्ट बॉलर्स आपके आए हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मोहम्मद जाहिद, कबीर खान, साजिद शाह, सभी लोग काफ़ी तगड़े थे। और यहाँ पर अभी इब्तिदा के दिन है, इंशाल्लाह ये भी उसी तरफ जाएंगे। एक रन का और इजाफा, मास सदाकत जो है अच्छी फॉर्म में रहे हैं। टॉप ऑर्डर से इन्होंने ज़्यादा दबाव नहीं स्टैलियंस पर आने दिया, मुसलसल रन्स बनाते चले आए हैं। लेफ्ट हैंडर्स हैं, इसका एक अलग बोनस है इनकी टीम के लिए। तीनों प्लेयर्स जो इस टाइम दो क्रीज पे मौजूद हैं और जिनके हाथ में बॉल है, तीनों का ताल्लुक केपी से है। बहुत सारी क्रिकेट इन्होंने इकट्ठे खेली है, खूब जानते हैं एक दूसरे को। इस बार अच्छी लेंथ, अच्छी लाइन, और हारिस ऑफ स्टंप की तरफ बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन थ्रो स्टंप्स पे लगी और अपील शादाब खान की तरफ से, जिसकी वजह से अंपायर को रेफर करना पड़ा इसे थर्ड अंपायर की तरफ। डायरेक्ट हिट है, और डायरेक्ट हिट्स जो है कभी कभार ये सम को चौंका देती हैं। और टीवी अंपायर एक नज़र इस पर डालना चाहते हैं। इम्तियाज इकबाल आज पहली इनिंग्स में भी उन पे खासा मुश्किल फैसला किया था, दरअसल शॉर्ट रन का था। यहाँ ये तो बआसानी पहुंच गए थे। और ये शायद जरूरत भी नहीं थी टीवी अंपायर के पास जाने की। शादाब खान के इसरार पर यह फैसला थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया गया, और कभी कभार फील्डिंग टीम्स को लगता है, लेकिन चीज़ वो नहीं होती। और ये बड़ा खूबसूरत शॉट, ये फ्लिक किया है और मिड विकेट की तरफ इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि स्क्वायर लेग डीप थी। बहुत ही शानदार शॉट, कंट्रोल के साथ इसको खेला है, और यकीनन अपनी लाइन और लेंथ को बेहतर करना पड़ेगा। जब लेफ्ट और राइट इकट्ठा खेलते हैं तो ये प्रॉब्लम्स अक्सर फास्ट बॉलर्स को फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ अच्छा रिस्ट वर्क, पूरी तरह से कंट्रोल में थे, जहां खेलना चाहते थे दरअसल गेंद वही गई। ये बहुत शानदार क्रिकेट है, अच्छी क्रिकेटिंग शॉट, बाउंड्री लगाई और उसके बाद सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेला एक अच्छे गेंद को और सिंगल हासिल किया। पार्टनरशिप पहुंची है, ये तकरीबन 28 रन्स पे पहुंच गई है पार्टनरशिप, और टीम के रन्स 56 है। पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल इन्होंने किया। अभी एक बॉल बाकी है इस पावर प्ले के अंदर। यहाँ पर दूसरा रन लेने के कहाँ हैं, मुड़ जाएंगे वापस, क्योंकि बाउंड्री का फासला खासा ज्यादा था। नर्म हाथों का इस्तेमाल किया था हारिस ने। ये ओवर डबल फिगर तक गया, 58 पर 1। पावर प्ले में 58 रन्स बने और ये सब हुआ। ये देखिए पहला शॉट, ये एक आसान कैच था जो वसीम जूनियर जो कि अच्छे फील्डर हैं इसको नहीं पकड़ सके। फिर बाउंड्रीज आती रही। मां सदाकत जो कि इस टूर्नामेंट में अभी तक खासी अच्छी बारियां ले रहे ओपनिंग पे आके। यासिर जिन्होंने काफ़ी बार अच्छी इब्तिदा की और उसके बाद वो ज़्यादा लंबा ना लेके चल सके इसको, उन्होंने 2 अच्छे स्ट्रोक लगाए। और फिर ये एक रश ऑफ ब्लड, एक सीधा गेंद, एक चेंज बॉलर का पहला बॉल और उसको इस तरह का शॉट मारा, अपनी विकेट खुद गवाई। उसके बाद हारिस आए, उन्होंने आके अपना एज यूजुअल अग्रेसिव इंटेंट दिखाया
और साथ कुछ अच्छे सिंगल्स भी लिए और स्कोर को पहुंचाया 58 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। उसामा, पिछले मैच में इनने बड़ा शानदार तबाहकुन स्पेल किया था। ऐसे वक्त पर आकर ये रन्स रोकने में, विकेटें लेने में कामयाब हुए थे। देखना यह है कि आज अपने उस फॉर्म को फिर से कैश करा पाएंगे या नहीं। अशद ज़रूरत है यहाँ पर उनकी टीम को। फील्ड अब खुल के रह गई। इस वक्त 5 फील्डर्स हैं डीप में। फुल शॉट खेला। यहाँ पर दूसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ेगी और आप पहुंचे। अच्छी दौड़ लगाई मास सदाकत ने, डेंजर एंड किया नहीं। दोनों बैटर्स की रनिंग जो है वो बड़ी एग्रेसिव है और जैसे ही गेंद गैप में जाता है पहला रन खूब तेज लेते हैं और इसी की वजह से बासानी दूसरा मुकम्मल कर रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है। स्ट्राइक रोटेशन बहुत आला कर रहे हैं ये दोनों बाउंड्री के साथ साथ। देखिए एक बार फिर इस गेंद को आराम से खेल दिया इन्होंने और इस टोटल में कोई बहुत ज़्यादा अंदर बड़ी हिटों की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक बाउंड्री के साथ ये अच्छी स्ट्राइक रोटेशन करते हैं तो बासानी इस टोटल को हासिल कर सकते हैं। 7वां ओवर है, 62 रन हैं, 2 सेट प्लेयर्स हैं, अच्छी फॉर्म में है तो विकेटें चाहिए होंगी अगर यहाँ पर लेक सिटी पैंथर्स ने इस मैच में वापसी करनी है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हैदर गेंद पर ओवर रन कर गए थे ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, जिसकी वजह से मास सदाकत वापस चले गए स्ट्राइक लेने के लिए। हारिस लेग स्पिनर पर इनको हमने आउट होते हुए देखा है 1 से ज्यादा बार और यहाँ विकेट मिल सकती है लेफ्ट हैंडर की भी। और ये उठे कैच के साथ। जी हाँ, मुबस्सिर खान बहुत दूर से दौड़े थे और आखिर में डाइव करके उन्होंने कैच मुकम्मल किया और हैरत अंगेज क्रिकेट का मुजाहरा, हैरत अंगेज फील्डिंग, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर शोएब मलिक की जो तस्वीर है वो आपको बताती है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी और इस गेंद पे बड़ी हिट लगाना चाहते थे, टाइम नहीं उसे कर सके और एक कैच जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था, मुबस्सिर खान ने शानदार रनिंग कैच किया है और डाइव की और मेंटेन रखा अपने बैलेंस को और इंश्योर किया कि गेंद हाथ से ना निकले और एंजॉय किया उन्होंने इस कैच को। और ऐसी ही फील्डिंग है जो टीमों को मैच में वापस लाती है, जब वो कहते हैं कैचेस विन मैचेस। मास सदाकत 18 रन के बाद जाना होगा इन्हें, 64 पे 2। बट ज्यादा हो गया, बहुत बट सेंटर। हुसैन तलत जो कि फॉर्म प्लेयर हैं एलाइट बैंक स्टैलियंस के, एक लेफ्ट हैंडर गए हैं, दूसरे आ गए हैं, तो ये लग्जरी है स्टैलियंस के पास। हम वक्त एक जो बाएं हाथ का बैटर है आमतौर पर रखते हैं उसको ये मैदान में। ने गेंद को बिल्कुल सिक्के पर गिराया। बहुत ही शानदार आगाज विकेट के साथ उनका पहला ओवर मुकम्मल, 64 पर 2। नहीं चला गया,
Bowling change, left arm, bowling round. मुकाबला इस वक्त बराबर का है। महा सदाकत जो अच्छी फॉर्म में थे वो वापस गए। पिछले मैच में नंबर 4 पोजीशन पर मोहसिन आए थे, आज हुसैन तलत उनसे पहले आ गए हैं। उसकी वजह ये लेफ्ट हैंडर के जाना था। महा सदाकत का बहुत ही कमाल कैच पकड़ा गया, टूर्नामेंट के बेहतरीन आउटफील्ड कैचेस में से एक था। और इस वक्त विकेट की अशद ज़रूरत थी, तो जाहिर है उसका थोड़ा बहुत प्रेशर भी होगा फील्डर के ऊपर। उसामा मीर इस टूर्नामेंट में भी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, इससे पहले पीएसएल के बेहतरीन बॉलर रहे हैं ये पिछले एडिशन में, और रिकॉर्ड बनाया इन्होंने विकेट लेने का। ये चीज़ अच्छी है स्टैलियंस की टीम के अंदर, जो स्टैंड आउट कर रही है चीज़ इस टूर्नामेंट में, वो इनकी स्ट्राइक रोटेशन है। बहुत ही शानदार, मेरा ख्याल है अगर हम इसकी परसेंटेजेस को चेक करें तो शायद इस टीम की सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होगी स्ट्राइक रोटेशन की। और यही वजह है कि इस टूर्नामेंट में ये अच्छी पार्टनरशिप्स लगाने में कामयाब रहे हैं। इस गेंद को फाइन खेला है और यहाँ पर शर्जील खान इसे रोक नहीं पाएंगे। ये अच्छा शॉट है, मिनिमम रिस्क और इसका फ़ायदा 4 रन्स। और हारिस की ये खासियत है कि अगर ये वक्त गुजारते हैं तो फिर ये इस तरह के शॉट्स खेलते हैं जिससे रन्स का फ्लो बरकरार रहता है। 70 पे पहुंची अलाइड बैंक स्टैलियंस की टीम और कप्तान काफ़ी सेट खेल रहे हैं। हारिस इस तरह के बैट्समैन हैं, अगर इनके सामने विकेट गिर भी जाए तो उस दबाव को ये फौरन ही ज़ायल कर देते हैं, जो इनने किया है यहाँ पर भी। मुसलसल 2 चौकों की मदद से अच्छा फुटवर्क और गैप को ढूंढ निकाला। जी हाँ, बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं। पहले ऑफ स्टंप के बाहर से छोटा पैडल स्वीप पे 4 रन्स लिए। पता था कि अब बॉलर जो हैं वो थोड़ा सा दूर पिच करेंगे बॉल को, क्योंकि अगले बॉल को वो स्वीप किया था, तो फीट को यूज करके बहुत अच्छा शॉट खेला इन्होंने। और साथ ही गैप में खेल के 2 रन्स, बहुत ही आला बैटिंग, रिस्क फ्री रन मेकिंग है ये। 10 रन्स बन गए 3 गेंदों में, और ऐसा नहीं लगा कि जहां पर कोई बड़ा रिस्क लिया हो इन्होंने। सलमान, एक सवाल लेकर आपकी तरफ आते हैं हम कि अब दूसरा राउंड आज शुरू हो रहा है। सिर्फ एक टीम जो है वो 200 का हिस्सा अबूर करने में कामयाब हुई अब तक। स्टैलियंस ने ही ये काम किया था, तो इसका जवाब हम ज़रूर हासिल करेंगे अपने अगले सेशन में। 77 पर 2। Well, this game is nicely poised. Allied Bank Stallions striking at 9.55. 6 bowlers already, and we've only gone through 8 overs into the 9th over, obviously. Lovely shed. Excellent Sama, excellent Sama. Alongside me, settling in is Ali Yunus. Good afternoon, Ali. What do you make of this bowling effort so far from the Lake City Panthers? Well, it's been a mixed bag. They bowled some friendly deliveries with some quality deliveries also. That shows that they've not been quite consistent. As many as 8 bowlers used, as you said. In fact, 6, but they've got a couple of more bowlers. I was assuming that Shadab and Danish Aziz, they can bowl too, so they've got 8 options as far as bowling is concerned. And out of the 8 overs, 3 has been bowled by Umar, so everyone else is bowled an over apiece. This is straight down the ground. He really chose a good area. Haris has been very proactive from ball 1.
Sends Osama over long on for a 4. That's a captain's inning, isn't it? He's taking the game on himself. Responsibility is shown and some quality shot making too. This is a top edge. It may land safely. Yes, it does. Fortune favors the brave. Harris has been like a cat on a hot tin roof ever since he's arrived. Striking at 200. That's how he plays. He will always give you chances. Risky batting style he has. That look on the face of Osama Mir tells the story. This feeling Harris is having quite a few near misses. Harris has been taking his time in this tournament. Not is the case today. 9 done, 85 for 2. Utilizing the Sunday, no school today, so it's a good time to come to the stadium, watch some quality cricket. Although very cold, but that doesn't stop the people of Rawalpindi. They've come in numbers, good crowd in today. Being a Sunday and a double header, we expect it to grow. It's pretty chilly in the stands. You have to come well prepared if you're planning to come down to Rawalpindi Cricket Stadium. Need some warm jackets. Nicely played, Hussain Talat. Really playing it late. Deft touch. Will earn him a boundary. That's excellent batting. It wasn't an edge, it was deliberate. He played it late, as you said. Picking up the length one more time. It was outside the off stump. How late he plays it. Just a tap from the front of the bat. Great batting. Something reminds me of something what Babar Azam does so brilliantly. Played it late and places it. Wasim will offer plenty of pace. That occasion, angling in. It's an important partnership. The required run rate, Ali, at this stage is well under control. 7.41. Allied Bank Stallions. They've been mixed back in the tournament, but got plenty of experience. These both sides have actually got good strength and depth. Absolutely. As far as T20 cricket is concerned, they're a very good side. They've got all bases covered. They've got the flair, stability also in the middle. Not getting the 2. Well done by the Anish Aziz. And the only issue I see with Lake City Panthers is fast bowling department. I think they're relying with Umar and Ahmad Butt medium pace, with Wasim Jr. With Ali Raza in the bench. I really hope that they bring him in the next games, because these conditions, these surfaces definitely suit his style of bowling. He bangs it in short. He's got good pace behind him. That's my personal opinion, though. It's a good bumper. Really surprising, Hussain Talat. Yeah, that's a good call, Ali. Ali Raza, very promising. Although, I might have thought it's just a case of workload management. His games are coming thick and fast. His young body still in the development phase. But I think you're right. After a gap of couple of games, maybe we'll see him in action. 20 years of age, work management, what work? We all used to love it at this age. Things have changed, Ali. It's not the same as they used to be. There's a lot of cricket that these boys have to play.
Talking of young fast bowlers, next to Zaman Khan is Zishan Zamir. Very, very good to see him back. We see him train every morning. Probably not ready for games yet, but he's well on the way back. Absolutely. Really looking forward to see him fit. It would be nice if we can see him fit in this tournament. Good opportunity in this surface. I know, bit of a spice for him in this surface. He can use that. Top edge. Fine leg was up in the ring. Ahmad Butt will challenge Haris, but Haris is very, very quick. At the halfway stage, Allied Bank Stallions 94 for 2, and it's time for drinks at the Pindi Stadium. Allied Bank Stallions looking in good shape here. Skipper Haris batting on 46 of 24. Decent enough start with contributions from Yasir and Maz. They both were dismissed after getting good starts. Now Hussain Talat, the form man, and skipper Hussain with Muhammad Haris, who's been in belligerent form. 46 of 24 from ball one. His intent was clear and he's prepared to chance his arm. Got away with it, and he's been ultra aggressive throughout this knock. Plenty of bowling options utilized, but just the 2 wickets for Lake City Panthers. Still yet to see Shadab at the bowling crease. Yeah, I did ask him the same question at the toss. If he's bowling fit, he wasn't quite sure that he wants to bowl. He's mainly playing in this game as a batter. As we see, a team who has picked up the momentum, Nurpur Lions. They're a team to watch out for in this tournament from now on. They're getting it right at the right time. It's a big clash this afternoon. Nurpur Lions are in the attendance already. UMT Markhors
formidable side under Misbah Haq, Saeed Ajmal and Iftikhar Ahmed. This has gone big. This is out of the park. Hussain Talat sends it soaring into the stands. He's the man in form, Hussain Talat. And that one was surely in his zone. Knee down, ball up into the stands. Beautiful shot, great pickup, great force also behind it. Never intended to keep it down and got the desired result. Went miles away into the stands. That was a big, big hit. Count the steps, Ali. How many rows back? 20. I don't think you were good at math in your school days, Ali. 100 has been brought up with this gigantic strike from Hussain Talat. Yasir Arafat enclosure, well populated. This one was right in the arc with the tide. Smashed. Mammoth hit from Hussain Talat. Quicker, flatter, Osama Mir. But it's been good pressure by the batters on the bowlers. Get a boundary early enough in the over and then push him to defensive. That's the trouble playing against ABL Stallions. All of them, you look at from start to bottom. Yasir Khan, Maaz, Haris, Hussain, Mohsin, Taimur, even Shoaib Malik. Their intent is quite positive all the time. All the time looking for boundaries, and they're in form too. So they're a very good batting side, Allied Bank Stallions. Well, if you look up for standout batters, Lake City Panthers, they've got Haider Ali, who's in sublime form, and Haris, who's been a different player. This is in the air, not a clean strike, but he may just get away with it. Yes, he does. Danish Aziz was really struggling to get underneath that ball, but that slice on the ball always kept the ball away from Danish Aziz. 11 gone, 104 for 2. Perfect Sunday. Sunday outing. Nothing gets better than this. Quality cricket, great weather, and a holiday. Sunday, the fun day, and it is a super Sunday here in Barrier Town Champions Cup T20. Humdinger of a clash coming your way in the afternoon. On the up are Nurpur Lions and formidable UMT Mark Horse. Oh, this is wrong line and been punished, but not the way Haris would have wanted. Just the single takes him closer to that landmark once again. He's on 48. Would be his second 50 of the tournament if he gets there. Yeah, Shadab trying different things, bringing back the off spinner. Mubassir Khan gave away 11 runs in his first over, got a wicket though in the very first delivery. They like bowling to Hussain Talat, the left-hander, but the trouble is on the other end, where Haris is looking some fantastic touch. He's just hitting them so beautifully, clean hitting, proper cricketing shots. It's about to reach a milestone, 48 at the moment. Looking at that onside boundary, this is where he's gone. But Ahmad Butt will do the tidying up. This is good from Mubassir, not allowing Haris to get underneath it. Just 62 more required of 51 deliveries. That's the equation. And looking at the batting lineup of Stallions, shouldn't be a problem. How quickly they do it, that's the question. They need to break this partnership, not just one, maybe the next one too. A couple of quick wickets can definitely bring them back. Nicely cut away. Work to do for Ahmad Butt again. But
won't be able to stop the second run on that occasion. Maybe an overthrow, but Hussain Talat overran that. Yeah, looking at the batting lineup, Mohammad Mohsin is also in form. How brilliantly he batted in the previous game. Definitely would be looking to see how he goes again. And then Shoaib Malik. And then Taimur. So they got plenty of resources in the tank. Once again running hard. 2 is the call. It's into the pocket. Brilliantly placed by Hussain Talat. And superb running. This is very good cricket. Yeah, that's where Hussain Talat is so good. Picking up the gaps. Soft hands. Knew that there was 2 available. Great combination. Where Hussain Talat can go big on his will and then can tap it in the gap and get couple. And again. Straight bat for 1. Good batting. Very good batting. 112 for 2 in 12. ये बैरियर डाउन प्रॉपर्टीज इनकी अगली पेशकश है। अब अपने आलमी मंसूबों को शुरू करना दुबई का रुख किया है बैरियर डाउन ने। वहाँ पर आलमी सतह की जो सहूलियात हैं वो पाएंगे। वसीम जूनियर आए हैं वापस। बड़ी अच्छी पोजीशन, उम्दा पार्टनरशिप 48 रन की, जिसके सबब अब यहाँ से जो बॉलर्स हैं इनको पापड़ बेलना है। सिर्फ 7 की औसत दरकार है, 8 विकेटें बाकी हैं। हमने देखा है टीमों ने यहाँ से भी कमबैक किया है। शादाब खान को अंदाज़ा होगा। मरीना इकबाल। बिल्कुल, और पहली इनिंग्स में भी हमने देखा कि जैसे 10वां ओवर मोहम्मद अली ने 2 विकेटें वहाँ से पिक की थी तो मोमेंटम वापस आ गया था। तो एक ओवर जिसमें अगर 1 या 2 हासिल कर सकते हैं विकेटें तो कामयाब होंगे, लेकिन अभी हुसैन तालत और हारिस का इरादा यही है कि जिस तरह का मोमेंटम हासिल किया हुआ इसको मजीद एक्सेलरेट करें। बहुत ही ख़राब गेंद था वसीम जूनियर की जानिब से। जी हाँ, अच्छा इस्तेमाल किया यहाँ पर अपनी क्रीज का से पुल कर दिया। 50 रन की पार्टनरशिप हुई महज 33 गेंदों में। हुसैन तलत अच्छे बैटिंग के दौर से गुजर रहे हैं इन दिनों। यहाँ शॉट को दोहराने चले गए थे, ये गेंद ज्यादा तेज नहीं निकली पड़ने के बाद। हारिस ने जवाब दिया है हैदर की उस इनिंग्स का जो काबिल तारीफ थी। शायद इनका जो बल्ला है उसकी हालत बिगड़ गई थी, और वैसे भी जो इनके बैटिंग करने का अंदाज है, इनको तो 1 से ज़्यादा बल्लों की ज़रूरत होती होगी एक टूर्नामेंट में। बिल्कुल, ज़्यादातर बैटर्स जो हैं वो तकरीबन 3 से 4 बैट्स रखते ज़रूर हैं, जिसमें से 1 या 2 आपके मखसूस मैच बैट होते हैं। और जब तक बैटर अपने बैट से कंफर्टेबल नहीं है तब तक एक इशू ज़रूर रहता है। हारिस अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। 50 रन यहाँ हारिस के मुकम्मल हुए। उम्दा बैटिंग का मुजाहरा उनकी जानिब से। ये टूर्नामेंट इनके और टीम के लिए बड़ा कारगर रहा है। अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया। सिर्फ 28 गेंदों में इनने ये रन्स बनाए। हालांकि कोई छक्का नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट 178 का शानदार। आज थोड़ा ज़्यादा जारहाना अंदाज में नज़र आए पहली ही गेंद से। ओवरऑल इस टूर्नामेंट में देखें तो थोड़ा सा अपने रोल को समझा भी है और अपना
तरीका भी थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन आज ज़्यादा अटैकिंग मोड में नज़र आ रहे हैं। अच्छा तेज बाउंसर वसीम जूनियर का, अंपायर ने वाइड का इशारा किया। ज़ाहिर है ये ओवर का एक बाउंसर भी शुमार होगा। T20 में आप एक ही बाउंसर कर सकते हैं। वनडे क्रिकेट में बॉलर को 2 बार बम्पर की इजाज़त होती है। ये बल्लेबाज को ये खौफजदा कर देने वाला बाउंसर था। इस वक्त जो है वो स्क्वायर फील्ड खड़ी कर दी गई है हुसैन तलत के खिलाफ। सामने साइड स्क्रीन के पीछे मूवमेंट है, दरअसल शायद वो जो गुजरगाह है जहाँ से तमाशाई जा रहे हैं नशिस्तों की तलाश में। आज के दिन आपको बॉलर्स में से किसने मुतासिर किया है? मरीना, ज़ाहिर है हैदर और हारिस की बैटिंग की तो बात होती रहेगी। इनिशियली आज हेल्प ज़रूर मिली है फास्ट बॉलर्स को, हमने पहली इनिंग्स में भी देखा, लेकिन लेक सिटी पैंथर्स ने मेरे ख्याल है उन कंडीशंस का ज़्यादा फ़ायदा उठाया नहीं नए गेंद से। और जैसे आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने पेस का अच्छा इस्तेमाल किया, नई गेंद पे वो अच्छे नज़र आए। और मोहम्मद अली स्टैंड आउट रहे हैं, जिस तरह की डेथ बॉलिंग उन्होंने आज की। बेहतरीन फुटवर्क, लाजवाब क्रिकेट शॉट था ये। कतई स्लॉग करने की कोशिश नहीं की और क्रीज से बाहर निकलकर भी टाइम करने में कामयाब हुए। चौके के साथ ये ओवर 12 पर खत्म हुआ, 124 पर 2। उसामा अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे क्योंकि यहाँ जो मुकाबला है ये खासा एकतरफा रहा है और 50 रन बनाए हारिस ने। दूसरी बार उनने ये कारनामा किया इस टूर्नामेंट में। ये वो खूबसूरत चौका था, बाहर निकलकर जैसे बल्ला मिलाया गेंद तक। अच्छी टेक्निक और एक अच्छा माइंडसेट देखने में नज़र आया है आरिस की जानिब से। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑल आउट अटैकिंग शॉट्स खेली हैं, इनिंग्स बिल्ड करते हुए नज़र आए। इनिशियली जिम्मेदारी भी खुद पे ली और एक और 50 रन अपने नाम किए। ये अच्छा चेंज मोहम्मद हारिस की अप्रोच में हमें देखने को मिला और वो काम भी कर रहा है, एग्जीक्यूशन भी उसी मुताबिक करते आ रहे हैं। हारिस पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान थे, हालिया इमर्जिंग एशिया कप में। उससे पहले ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेले हैं, लेकिन जाहिर है अब ये पाकिस्तान टीम से दूर हैं इन दिनों। हसीबुल्ला जो हैं टेस्ट टीम में चले गए, इनके पीछे आकर, और इनकी वनडे स्क्वाड में भी जगह नहीं बनी। जो वनडे की टीमें गई थी अभी हाल ही में अफ्रीका के दौरे पर, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में, जाहिर है उसका भी एहसास हुआ होगा। वो भी जो आपने बात की कि हारिस ने बहुत अच्छी सुलझी हुई बैटिंग की और यहाँ ये ज़्यादा अच्छा शॉट नहीं था और कैच ले लिया आकर अरफात मिनहाज ने। रिवर्स का पुण्य बनाया, खासा हाई बॉल था।
लेकिन उम्दा कैच और इस तरह विकेट मिल गई जिसके मुतलाशी थे उसामा। अच्छी पार्टनरशिप जा रही थी दोनों के दरमियान और ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब है उसामा। हुसैन तलत ख्याल है मिड विकेट खेलना चाह रहे थे, लेकिन उसामा की गेंद की लेंथ को पिक नहीं कर पाए। थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी था जिसकी वजह से जो मिड विकेट बाउंड्री की ऑप्शन थी वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए और सीधा गेंद खड़ा कर दिया। और अच्छा जज किया हुआ कैच अराफात की जानिब से, थोड़ा सा आगे निकले थे लेकिन एडजस्ट किया और एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है लेक सिटी पैंथर्स को। हुसैन तलत 32 बना के वापस 128 पे 3। मोहम्मद मोहसिन आए हैं, नए खिलाड़ी। उनकी एक इनिंग्स सेंचुरी है जो अभी इन्होंने पिछले मैच में बनाई थी। कदर ताखीर से मौका मिला है उन्हें इस सतह पर, लेकिन सलाहियतों की कोई कमी नहीं। खासे मंजे हुए बैट्समैन लगते हैं। बहुत अच्छी पार्टनरशिप इन्होंने हुसैन तलत के साथ बनाई थी पिछले मैच में, प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए थे और अभी भी वैसे ही मौका है, ज़्यादा रन रेट रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा स्वीप शॉट खेला यहाँ पर, तीसरे रन के लिए भी क्या आएंगे। मोहसिन ने बुलाया जरूर था हारिस को, लेकिन उन्होंने खतरा मोल नहीं लिया। उमर थे फील्डर और 14 ओवर्स के बाद 130 पर 3। मिस्टर शिराज सलीम बैरियर टाउन के हेड ऑफ मार्केटिंग हैं, टाइटल स्पॉन्सर्स हैं इस बैरियर टाउन पाकिस्तान T20 चैंपियंस कप के 2024 के। बैरियर टाउन जो है अब इनके आलमी मंसूबा जात जो है शुरू हुआ चाहते हैं दुबई से, इसका आगाज हो रहा है। यहाँ पे थोड़े डबल माइंड में लगे मोहसिन और हारिस। 2 रन अवेलेबल थे लेकिन एक पे इत्तेफाक किया। जो है वो 6.5 का और करंटली ये 9 पे चल रहे हैं। यहाँ पे बस लेक सिटी पैंथर्स की कोशिश होनी चाहिए कि अगर एक और विकेट हासिल कर पाते हैं तो फिर शायद मुकाबला जो है वो एक करीबी मामला बन सकता है। वो शॉर्ट गेंद थी और इसे कट किया, बहुत जोरों पर नजर आए हारिस। गेंद बेहद तेजी के साथ गई चौके के लिए। वो जल्दी इस मुकाबले को खत्म करना चाहते हैं। देखिए जो ही थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर जगह नजर आई, ये बहुत काफी थी इनके लिए। पीछे था गेंद। अराफात मिन्हाज को ये जरूरी है समझना कि हारिस की क्या स्ट्रेंथ्स हैं। शानदार विकेट कीपिंग और उतनी आला बॉलिंग भी अराफात मिन्हाज की जानिब से। हारिस उनके दाम में आ गए। बिलाखिर ये मुकाबला रास नहीं आया। कप्तान हारिस को अच्छी स्टंपिंग विकेटों के पीछे उमर सिद्दीक की। अच्छा कमबैक था अराफात की जानिब से। पिछला गेंद खिंचा हुआ था, आउटसाइड ऑफ स्टंप था जिसको कट किया था 4 रन के लिए। इस बार थोड़ा सा फ्लैटर ट्रैजेक्टरी थी अराफात की जानिब से और बहुत ही जल्दी क्रीज से बाहर आ गए थे हारिस।
देखें इनटू द सरफेस कराई थी जिसकी वजह से बीट हुए और बाकी काम उमर सिद्दीक ने किया। एक बड़ा ब्रेक थ्रू और ये अलाइड बैंक स्टैलियंस के लिए एक बड़ा झटका भी, क्योंकि कप्तान की वापसी हुई भी 61 बना के वापस डगआउट में अलाइड बैंक स्टैलियंस 136 for 4। ऑल एक्सपीरियंस शुएब मलिक बहुत बार ऐसी सिचुएशंस में आके बैटिंग कर चुके हैं और मैच भी जितवा चुके हैं। 33 रन सिर्फ दरकार हैं अलाइड बैंक स्टैलियंस को यहाँ से मैच जीतने के लिए। जितना इनका एक्सपीरियंस है कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगी। ये नंबर्स बताते हैं कि कितने शानदार बैटर रह चुके हैं ये। एक अच्छा स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट 95, बहुत तजर्बा है इनके पास हर तरह की सरफेस, हर तरह के बॉलर्स को फेस करने। तेज गेंद करने की कोशिश की थी अरफात मिनहाज से। मलिक ने अपना पहला रन हासिल किया इसे ऑफ साइड में धकेल कर। अच्छा ओवर मिनहाज की तरफ से 137, 4 विकेट। ये पहले 2 ओवर्स के बाद से आप देख सकते हैं कि अलाइड बैंक स्टैलियंस की जो लकीर है कितनी ज़्यादा ऊपर रही है। सिर्फ जो विकेटें हैं वही इनको बराबर में नीचे ला सकते हैं नीली लकीर की। और रावलपिंडी में आज एक मैच और खेला जाना है तो इतवार के एतबार से बिल्कुल सीन सेट है। इसके बाद यहाँ पर नूरपुर लायंस की टीम खेलेगी जिसने पिछले दोनों मैचेस जीते हैं। इमामुल हक कप्तान है। यूएमटी मार्कोर्स की टीम पहले राउंड में उन्होंने 3 फतवाहत हासिल की थी। उनको मैदान में उतरना है। दानिश अजीज क्या ये अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग का जादू जगा सकते हैं? ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं ज़्यादातर। आज अच्छी बैटिंग का इन्होंने मुजाहरा किया था। आज थोड़ी सी अगर कप्तानी की बात करें शायद आप बहुत जल्दी डिफेंसिव हो गए थे। दानिश अजीज के नंबर्स हैं, अक्सर इन्हें ब्रेक थ्रूज के लिए भी इस्तेमाल किया गया। स्टार्टिंग में नए बॉल में भी हमने देखा है कि स्लिप का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। इजी रन्स स्पेशली सिंगल्स जो हैं वो पहले ओवर से ही दस्तयाब थे। जब आप इस तरह का टोटल डिफेंड कर रहे हो तो कंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। नए बॉल से हालांकि यूज़ किया जाता तो विकेट्स लेने जाते तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती थी अलाइड बैंक स्टैलियंस को, लेकिन आज थोड़ी डिफेंसिव कप्तानी देखने को नजर आई। उसामा शुएब मलिक के लिए मिड ऑफ पर आए हैं। वाइड मिड ऑफ पर, लॉन्ग ऑफ पर हैदर अली के पीछे हैं। एक ही गेंद को स्पिनर की 2 तरह से खेल सकते हैं, उन्होंने कर दिखाया। ये लेंथ थोड़ी पीछे कर गए थे। आइडिया सही है क्योंकि शुएब मलिक इस वक्त शायद बड़ी हिट के लिए ना जाए, उनके लिए आसान है सिंगल्स रोटेट करना। उन सिंगल्स को ही कट डाउन करना चाह रहे थे, लेकिन दानिश ने लेंथ थोड़ी पीछे कर दी जिसलिए टाइम मिल गया उन्हें ऑन साइड पे खेलने का।
इस बार दूसरे रन के लिए आना चाहेंगे क्योंकि आहिस्ता से खेला था और एक ही आखिर में बन सका। अच्छा ओवर दानिश अजीज का रहा 143 पर 4। It's a murky afternoon here in Rawalpindi. The run chase has been pretty good from Allied Bank Stallions. Getting into the last 4 overs, just needing a little over a run a ball with Mohsin in the middle, and the past master of run chase is Shoaib Malik. You would think it should be walk in the park, but we know cricket is a funny game. Beautiful shots of Rawalpindi Cricket Stadium. This is where Shoaib Malik is at ease. Can ease into the innings, and easing into his chair alongside me is former Pakistan skipper Salman Butt. Thank you, Shaji. Yes, Stallions have put up a very decent batting show, and as a result they have got this match to nearly run a ball, and that is the ideal position to be, courtesy Haris playing well, Hussain Talat coming in once again scoring runs, and now the experienced mentor Shoaib Malik is there to see his side home, and along with him is Mohsin, who looked excellent in the last game, and even he's come out today. You can see the confidence in his body language. And Lake City Panthers would feel they had a chance to score big runs, but losing wickets and clusters did not enable them to do so. At 2 occasions in their innings, they lost wickets. One was when they were 73 for 1, they lost 2 together, and then after getting to 136 with 2 set batters, they lost a wicket at 136 and 143, and then it just started to happen very frequently. Some turn there for Arafat Minhas. Beautifully flighted delivery, turn and grip. Sign of things to come in the afternoon. Remember, we got another game coming up. Malik watches it very closely onto his bat. Good over from young Arafat Minhas, 17 gone. Allied Bank Stallions, 146 for 4. Lake City Panthers 168 for 7, plays 146 so far for 4, in control, 23 needed of 18 balls. That's the equation. It's important that the batters now look to play straight. Why I say that is because this bowler Wasim Jr. has a tendency to bring the ball back in off the surface of the pitch, and his ball tails in and skids off the surface. We have seen him get wickets, people looking to dab him down to third. So it's important that they play in front. And this one was there. A touch close to cut, but the shot was on. Mohsin missing it. The very smart Mr. Shiraz Salim, head of maintenance,
and services. Barrier Town is there to witness the game as Barrier Town sponsors this T20 Cup. They also go global, meanwhile, bringing a gated community in the Bay South. Well, dots are building in the meantime. They required 26 of 24, and now they require 23 of 15. Well, yes, Lake City Panthers would need a lot of dot balls and nearly everything in the right areas. So Stallions need not to panic and take a calculated risk if they have to. There's loads of gaps, people on the boundary, 2 runs are always there. This is something which isn't required. Very well ball, Wasim. 6 dots, Salman. And the way the table is, it's pretty close. And remember, one team will qualify directly for the final. Net run rates can come into it as well. Bit sloppy, Allied Bank Stallions in the last 6 deliveries. They're creating interest in the game out of nowhere. Just need to play normal cricket. And this should be over as this one hits the helmet and goes down the third man for the one which is given as a leg bye. The umpire will test him for concussion. Will be hold up now. But this is dragging on for the last 5-7 minutes for Allied Bank Stallions. Wasim is kiddie, we all know that. And hit him flush on the side of the helmet. Good job, he's got the visor and the protection. Could have been very nasty. Mohsin coming off the back of a very good half century in the previous game. Player of the match performance from him. Stallions would remember that they lost a game from this position when they required 38 of 30 odd deliveries. 35 or 25, but it was 38 of 30 deliveries before that, and they started to lose wickets. And then the panic set in. So they need not to panic. Just keep rotating the strike, because one boundary will bring it closer to run a ball, and then a couple of will finish it off. But there shouldn't be the loss of wickets and the panic. Haris looks on with great interest. Definitely Stallions want to win it and secure their top spot. Was that a worried look, Salman? A concerned, I would say. He's definitely been through these circumstances in a game so many times. These situations arise, and that is where Shoaib Malik should lead from the front. A man having played 500 plus T20 should know all the paths of getting through. There is no Wasim Bhai and Waqar Bhai to bowl the last 2 overs. That was the duo who could do the unbelievable, and they did it so frequently. Yeah, definitely they would have been a sure bet to win if that equation was there when they were around. Good crowd, the best crowd of the tournament so far. They're really excited. They've all gathered where UMT Markhors are training, having a closer look at the stars, someone like Fakhr Zaman and Iftikhar. Important delivery this. Last ball of Wasim Jr.'s over, and his spell. Big shout, big shout. Umar Sadiq was celebrating. Nothing says umpire Sajid Afridi. Another dot ball. Wow. This is getting a bit tense here. 18 gone. 148 for 4.
Saeed Ajmal, the magician, was greeted by the crowd. Misbah Haq is also there. Well, Allied Bank Stallions need a boundary or two in this over. Arafat Minhas has been able to turn the ball. Excitement building. Goes down the wicket. Nice adjustment of length there from Arafat. Well, things get tighter as Stallions would be remembering the previous game, the demons from that game when they required 37 of 25 with 8 wickets in hand. And in the end, they lost the game. And once again, Shoaib Malik right at the center of such a situation. As this one has been clobbered straight over the head of the fielder, not very well connected, and misfield enables an easy couple. So there is desperation on both sides, and the team that holds the nerve should win it from here. That's the appeal. Last ball, last over. Sliding in, probably impact was just outside the off stump. Good call, Sajid Afridi, but it's all about now. Smashing blow. Absolutely terrific strike down the ground. Even Wasim was quite quick, couldn't get around. A timely boundary. Yes, he is still very quick on his feet. Great use of them. And he clobbers one down the ground for a boundary. The fielder Wasim Jr., he's quick, but he wasn't quick enough for this stroke as Shoaib Malik hits it hard to get this vital boundary and ease off some pressure. But they will need a couple of more boundaries somewhere around the corner in the remaining 9 balls. As this one is placed over cover, but the fielder, well, Shoaib Malik is running, and we all know he's quick, but we'll see whether he's quick enough. He seems to have pulled up a muscle and he's just limping, but the reaction of the fielding side tells you that he was quick enough. Yeah, Mahd Butt is a very good outfielder. He tested Shoaib Malik all the way. The throw was wider, allowing Shoaib Malik to get in, probably not by much. Umpire is hiding the view of the stumps. This will probably be the best picture, and Malik is home. Excellent running in the end. Probably a calf or a hamstring at the moment has been and here is the official decision, not out, so no worries there, but the only worry is the pulled muscle. Shoaib Malik 14 of 13, just getting in the rhythm, has 13 more required of the last 8 deliveries, and he would love another boundary in these 2 deliveries. Wouldn't want much pressure in the last over. So very crucial 2 balls remain in this over. Arafat, the youngster, bowling well. 156 for 4 is Allied Bank Stallions, as a number of people watch this with great interest, and Haris, his concern will remain till they get over the line. Sure, and look at the Sunday crowd building up, but also think about the last over. If Arafat Minhas, when Shoaib Malik gets ready, gets away with this over, how many would he leave for the last over? And a decision for skipper as well, Shadab Khan. Look at this running, Shoaib Malik running in straight line, a blind turn which is not recommended, and a slightly longer route on the way back. Yes, his speed allows him to do that. He's ultra quick, and this is the guy, the oldest guy playing in this tournament, and perhaps is the quickest guy. So that myth of age being something that stops you, if you train well enough, if you eat well enough, if you know your body, then you can definitely do things which others only wonder. Again, I'll bring you to the question, who would you fancy for the last over if it goes that far? Wasim Jr. has bowled out, who would normally bowl the last over. This is being thumped by Malik. Good hand from Osama. May just concede a run because it was going straight to the sweeper. It's a very crucial position, this, and
they have two fielders who are probably not the fastest, Shirjeel and Usama, third and point, especially when the bowler plans to bowl a bit short with two fielders in the ring on the covers. You can't expect the bowler to bowl full. So this makes these two fielding positions very vital, and an extra run which has taken the required runs to 11 of 7 deliveries. A very important ball this. And the edge goes through the same set of fielders, and that's a boundary. Perhaps luck on side of the Stallions. Fortune favors the brave. Shoaib Malik stepping down, going over cover. The idea was right. The result is ideal, but not the direction. It's 162 for 4. Ever reliable Ahmad Butt has been given the responsibility to protect 7 runs. Shaji, it's a challenge in this weather to stay warmed up, especially for fast bowlers to come in after a layoff and deliver this final over with such command of accuracy which will be required. See, 7 of 6 required, and he's been fielding in the outfield. So all the players playing this tournament in this weather, they just need to keep moving and stretching because they can be called any time in this format. And it's Mohsin, 6 of 7 required. And Ahmad Butt to deliver this final over. Third man, final leg, both up in the ring. Mohsin calmly does the job. He gives it to Shoaib Malik. You've done it for decades, sir. Go on and finish this one as well. Yes, that makes sense. And had it been any better on strike, you shouldn't miss the run of any delivery from here onwards, because that brings more pressure on the fielding side as well. And it's been twice now that the Allied Bank Stallions have been in commanding positions, and then there's a slowdown in between, which makes their last couple of overs very difficult. And I think they definitely would sit down and review this situation, which has happened twice now, and they would want to avoid such situations come the bigger games. Yeah, definitely. They need to address that issue. They bossed the run chase until the last 2 overs, and on the previous occasion as well. Needed 23 of 2, couldn't get over the line. This one, they look more in control. They needed 21 in the last 2, and now they need 6 of 5. Crashed away, straight to the sweeper. Pressure building the longer it goes into the over. Has come down to 1 stroke certainly. 5 runs required of 4 deliveries. A 4 will equal it, and a 6 will win it. But it has to be done before any result comes out. Mohsin 9 of 13. He's watching the ball well. He's in form. This is Yasser, who's been playing little cameos, hasn't carried on in this tournament. As Ahmad Butt prepares, and the whole Lake City Panthers wishes him luck to be as accurate as possible. Once again, cut hard, and this time he's looking for the second run, and he will make it easy. And I don't know why the keeper didn't make a throw. It's about getting wickets, not saving the extra run at the moment, because Haider Ali was running for the backup. Shadab is furious, isn't happy. That was Danish Aziz in the deep. He's not one of the very quick movers. But you make a point. Haider Ali was backing up. He was alert. The wicketkeeper just held the throw back. Third up in the ring. So is backward point. And the fielder at point is deep on the boundary. Very little protection in front of square on the offside. If Mohsin is able to get it through.
Good Yorker, Ahmad, but it's in the gap though. Nicely struck, and that is the winning moment. And look at the passionate celebration from Mohsin, who delivered the killer blow in the end. Allied Bank Stallions getting over the line in a nervy finish. A solid shot that to finish the game. A full toss placed between the two fielders perfectly on the onside, between mid-wicket and long on. And Shoaib Malik and Mohsin finish it, and they take Allied Bank Stallions over the line to register this important victory. They get to 170 for 4 of 19.4 overs. They win with 2 balls to spare, and they would definitely go back to the drawing board and discuss how to avoid these tight situations when they have been at such ease in the run chase. But for now, they can enjoy their victory. It was a great shot to finish the game, and Mohsin showing loads of passion in these pictures, and he knows that he should have and could have done better. And the pressure is off now, but definitely the discussion is, why did we get so far with this? A great game of cricket in front of a very good crowd, the Sunday crowd at Rawalpindi Stadium. It got a bit too tight for Haris's liking. Probably they'll sit down and talk about it, but a good fight in the end from Lake City Panthers. And at the halfway stage, Salman, the way you said, they probably fell 15 to 20 short of what they were looking to achieve, and that is what Lake City Panthers will reflect on, but points to Allied Bank Stallions. Shaji, there is no formula in sport that only ends up on the winning side. You can falter with anything, but consistency comes with the tried and trusted methods. What's difference between the two sides is wickets falling in clusters for Lake City Panthers, and for Allied Bank Stallions, they have continued to maintain partnerships, and that is where the two teams have differed, and that is why the result has gone in the favor of the Allied Bank Stallions. They were in a position, the Lake City Panthers, to score big, but in the end, their wickets falling didn't allow them to do so. Here you can see partnerships from ball 1 till the end. 20 to Yasir, Maaz 18, 61, very crucial, of 35 deliveries for Haris. Hussain Talat, once again important, 32 runs in the middle. Mohsin and Shoaib Malik taking the team over the line with 15 and 21 each, and in the end, they managed to chase it down. Just the 4 wickets for Lake City Panthers. They used 7 bowlers. Shadab tried plenty of things. Osama was probably the pick, 2 for 30. Still no effort from Shadab on the bowling crease. He's just purely played as a batter in this game, recovering from back injury. 1 wicket from Arafat Minhas, who looked good in patches. In pursuit of 169, Allied Bank Stallions, they got off to a decent start. Yasir and Maaz Sadakat rode a bit of a luck. Wasim Jr. shelling an easy one. Maaz Sadakat once again looked good. Yasir has throughout the tournament without propelling into any kind of big scores. Mubassir made the breakthrough with his first over. Yasir dismissed and getting a send-off from Mubassir, but Haris was aggressive from the get-go. Yes, Haris has been instrumental in these victories. He's been scoring runs, he's been recognizing the situations and playing accordingly, as Mubassir Khan took a blinder in the outfield, and Hussain Talat just kept going with his form, hitting this huge 6 and this pull shot over mid-wicket for a boundary. And on the other end, Haris continued to get to another 50, and the captain is definitely creating a difference with his own mindset, his own approach, and he's getting the results. Just have a look at that brilliant stroke over extra cover, and Hussain Talat wanted to go big. It went high, but the distance wasn't there. In the end, held out to Arafat. Haris premeditating, and Arafat being smart. Then came Shoaib Malik, and the experience of 500 plus games, managing to take the team through with this stroke from Mohsin. Full toss, beautiful cricket shot played, and a game that has been won. On a hazy, murky afternoon, we saw a great game of cricket. Lake City Panthers 168
for 7 plays. Allied Bank Stallions 170 for 4 in 19.4. Great knock from skipper Haris and well supported from Hussain Talat and Shoaib Malik. Seeing Allied Bank Stallions getting over the line with 6 wickets in the tank and 2 balls remaining. Allied Bank Stallions picking up a couple of points along the way. Important couple of points, and that will propel them to the top of the table, both in terms of points and the net run rate. UMT Markhors and Nurpur Lions go head to head in the next game. How tight it is between the 4 teams. Nothing much to play. Remember, the team that tops the table will go to the finals directly, and the 2 teams beneath them will play a qualifier. So all to play for. And I think it's time for us to go downstairs and post-match presentation ceremony. Ali Yunus is ready. Over to you, Ali. Thank you very much, Faisal. And what a great game of cricket we've just witnessed. It was ABL Stallions keeping the cool and winning the game by 6 wickets. Welcome to the post-match presentation. And in the presentation party, I have with me Mr. Shiraz Salim, who is the head of maintenance and services, Beria Town. Before we talk to the captains, let's talk to the losing captain first, because the winning captain is also the player of the match. So the first, I'd like to invite Mr. Shadab Khan, the losing captain, to have a word with us. Tough luck. गेम में थे काफ़ी टाइम पे, बट आई थिंक वो की मोमेंट शायद कैपिटलाइज नहीं कर सके. जी बिल्कुल अली भाई, मेरे ख्याल से जिस तरह का हम स्टैंडर्ड डिमांड कर रहे थे, जिस तरह की हमारी यंग टीम है ऑन पेपर, मुझे लगता है वो एटीट्यूड, वो एनर्जी और वो हंगर अभी तक उस तरह हम ग्राउंड में शो नहीं कर पाए. मुझे लगता है कि फील्डिंग लैप्सेस की वजह से क्लोज, जब आप क्रूशियल मोमेंट तभी नहीं जीते जब आपके फील्डिंग में इतना अच्छा एटीट्यूड नहीं होता. तो मुझे लगता है कि हमारा एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं था फील्डिंग में, वो बेहतर करने की ज़रूरत है. 168 रन्स आपने कर लिए थे जब, तो हाफ वे स्टेज, तो क्या मैसेज था टीम के लिए कि कैसे कहाँ लड़ना है? देखिए सिंपल मैसेज था. पहले भी जब मेरी बात हुई थी तो हम चाह रहे थे कि 160, 180, 170 तक हम करें, और वो हमने अचीव किया. मुझे लगता है कि स्टिल वही, मुझे लगता है कि बॉलिंग एज ए बॉलिंग यूनिट हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की है जो लास्ट स्टेज तक हम लेके आए, लेकिन एज ए फील्डिंग यूनिट हमें बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपसे थ्रो पे डबल हो रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि बहुत हार्ड करते हैं. बट इतनी सारी ख़राब चीज़ों में एक अच्छी चीज़ ज़रूर है, वो है हैदर अली का फॉर्म में आना. क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए माशाल्लाह वो जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, और मुझे लगता है कि उसको अब थोड़ी अपनी गेम की समझ आ गई है कि और उसको समझ भी आ गया आर्ट स्कोर रन करने का आर्ट भी होता है, और मुझे लगता है वो उसको चीज़ें आ गई हैं, और होपफुली वो इसी थ्रू आउट द टूर्नामेंट इसी तरह खेलता रहे. थैंक यू वेरी मच शदाब खान. ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग गेम्स. Right now, the winning captain, and who also happens to be the player of the match, Haris, I would request Mr. Shiraz Salim to please step forward and hand him over the cash prize of 25,000 and a beautiful trophy. 61 runs of 35 deliveries with 8 boundaries for Haris. पूरा मैच आप बड़े ख़राब से मूड में बैठे रहे आउट होने के बाद, अब तो हंस दीजिए, जीत गए हैं. वेल शोएब भाई हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हमेशा फिनिश करके आओ, बार बार तलकीन करते रहते हैं, तो उसका दुख था कि फिनिश करके आना चाहिए था. दुख अपने आप के साथ था कि आप खुद फिनिश नहीं कर सके? जी बिल्कुल इस तरह ही है, चूँकि हम अगर इधर से नहीं सीखेंगे तो फिर ऊपर भी मसला होगा. यही चीज़ वो हमने इधर डेवलप करनी है कि हमने गेम कैसे फिनिश करनी है. अगर गेम बनाते तो फिर इसको फिनिश कैसे करना है. आपके अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बहुत शानदार रही है, तो क्या बदल रहे हैं, क्या एटीट्यूड में चेंज आया है? वेल एटीट्यूड में यही चेंज है कि अब सामने खेल रहे हो पीछे के बजाय तो उसकी वजह से थोड़े रन भी ज़्यादा हो रहे हैं. पहले मैं कोशिश करता था क्योंकि 20-20, 25-25 पे आउट होता था, तो फर्स्ट क्लास को मैं क्रेडिट दूंगा, वो क्रिकेट में खेलो और उसने काफ़ी हेल्प की मुझे मेरी बैटिंग में. तो अभी मैं टाइम भी लेता हूँ और जब बैट बॉल मिलते हैं तो उस पर शॉट भी मारता हूँ. एज ए टीम अगर बात करें, एज ए कैप्टन, आप सेटिस्फाइड हैं इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि थोड़ा लेट तो हो गया था मैच जीतने में? जी बिल्कुल, वही ना कि मुझे फिनिश करना चाहिए था, वहाँ मुझसे गलती हुई. और एज अ टीम यही कहूँगा कि फील्डिंग में हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, क्योंकि हाथों में 2 दे रहे हैं. उस पर हम अगर तीनों डिपार्टमेंट में और अच्छा करते तो ये 150-160 में कवर हो जाते. चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग गेम्स हारिस. थैंक यू. Right, that is all for the presentation at the moment, but the action will return for the second game of the day. It's Nurpur Lions taking on UMT Marco. That's a big game. Don't go anywhere. We'll be right back with the action. And taken easily by Muhammad Ali. Up
him over. और अपना 50 किया 40 गेंदों पे तीसरी टेस्ट सेंचुरी है. Wasim Jr. who makes a mess of it. Oh no, that's a biggie. डाइव करके उन्होंने कैच मुकम्मल किया. 50 रन यहाँ हैरिस मुकम्मल हुए. बैटिंग का मुजाहरा. Nicely struck, and that is the winning moment. And look at the passionate celebration